Hi everyone, I can see people have started joining in. I'm hoping I'm audible. Uh, so I'll assume that I'm audible. In case I'm not audible, just let me know in the comments and I can check on my end if I'm audible or not. For those of you who are joining us for the first time, hi, I'm Khyati. I am one of the founders of CrafTangles, and we normally try and do weekend workshops where we do live of our art and craft supplies, and we do live projects using them so that you guys can see how we make projects, etc., what goes it through our mind. You can see the live demo of our products, etc. Can one of the person just comment down below if they are able to hear me properly, and am I audible? uh, so in fact, this week was a huge week for us because we did a very huge release. I think in all we released almost 75 plus products. Hi Shalu. So in all we released almost 75 plus products, and all of those were made in India. One of the biggest launch that we did this week was our Decoupage napkins. So these are made in India Decoupage napkins that we launched. Just one sample that I'm showing you, just as to show you how thin they are. Okay, now these are same as the thickness and the look and feel and the quality same as one ply decoupage that a lot of people use, but the print quality and all is much better. So what happened was since this is a fairly new product, a lot of people don't know how to use them, etc. What we are going to do is apart from of course a lot of reels and tutorials and YouTube and free courses that we are going to launch in this upcoming month, we also want to do a lot of live using this particular product because a lot of time people can ask questions in live. They can understand how it is being used by each and every DT, what goes in their mind when they are using these products, etc. So that is why we have 4 lives this month, one with Parvathi, one with Sneha, and 2 with Anamika, and all those are going to be about this particular product only. We are going to show you 4 projects live on how you are going how different DTs are going to use this decoupage napkin. Now this is over and above your regular lives, etc., that we normally do, YouTube tutorials, etc. So this month, purely Instagram, we are going to do 4 lives just with decoupage napkin. So I hope that's clear. And for those of you who are buying our new launch, you need to know that the tutorials are coming soon. And of course, if you have already bought, which I know a lot of people have already started buying these decoupage napkins from our website as they are live, you can always ask us questions on how what we are using it, etc. So today we will get technical and we will talk about हम लोग इसको कैसे use करेंगे in different projects, etc. So this is just one such example. हमने ऐसी 50 डिजाइन लॉन्च की है. Parvati is going to use one such design of this napkin, made in India decoupage napkin. So we'll see what she is using. And for those of you who are interested, हमारा live ये napkins, फिर our pre-cut stickers, made in India pre-cut stickers, all these are already live on our website. They are selling fast. If you are interested, do check them out. We have also done like a small transfer release, which have also started selling already. So in case you are looking for all those products, do check them out. Journal supplies, transfers, stencils, decoupage, everything is live. And I will get into today's live with Parvati. I think she has already joined. Just let me check if I can find her. And meanwhile, while I'm inviting Parvati, invite. Okay, Parvati. Okay. Hello. Same issue. I can see you in another mobile, but not in this mobile. वो I think common issue है. Last week अनामिका को भी आ रहा था Insta पे, but you are visible. Okay, great. Hello, everyone. I couldn't see you live till now, so I had WhatsApp you कि हाँ, पता नहीं वो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है. बहुत लोगों को है ना, दिख नहीं रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है. मुझे भी वही हो रहा था. अभी आई कैन सी ऑन द मेन फोन. Okay. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है. 2-3 फोन लेके बैठना पड़ रहा है. तो इसलिए I don't know. Anamika also had this issue last week. पता नहीं. क्योंकि I came in
and I was checking कि मतलब live नहीं आया, live नहीं आया, हाँ, live नहीं आया. मुझे अभी आपका कॉल आया, मैं उसी से लाइव हूँ, तो मुझे दिख रहा है अरे पार्वती तो कॉल करी, तो मैंने फिर झट से इनवाइट किया। जैसे ही मैंने कॉल किया ना, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आया CraftAngles इज इनवाइटिंग यू. तो मैंने बोला वो तुरंत काटो. हाँ, तो हाँ, मैंने लोगों को इंट्रो दे दिया, छोटा प्रोडक्ट के बारे में बात कर दी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, मतलब यूजिंग दीज नैपकिंस टाइप। Yeah. तो आप मतलब यू कैन स्टार्ट। Okay, great. So, as you all know, we have introduced this new product. ख्याति ने already वो पूरा introduction दे दिया होगा कि क्या है, कैसे है. राइट। And I can vouch that these are amazing. We have made some samples using these या products. I am चेक आवर completely new स्टोरीज, to. आज मैंने पारो हाँ, के सैंपल्स डाले हैं, अच्छा ज्यादा. सो यू कैन चेक आवर स्टोरीज। हाँ, मैंने आज सब आपके डाले हैं, फिर स्नेहा के साथ लाइव होगा तो स्नेहा के डालूंगी, अनामिका के साथ होगा तो अनामिका के डालूंगी। वैसे मैं सबके प्रोजेक्ट्स डाल रही हूँ इन स्टोरीज, सो दैट पीपल कैन सी कि सबने इतनी मेहनत करी है, तो आई वांटेड पीपल टू सी। हाय Right. कविता। So maybe quickly, मेरे पास हम्म। सारे samples नहीं है. एक वो बुद्धा वाला ओके। तो I have given off to my brother. हाँ, एक्चुअली आप वीडियो में दिखा सकते हो कि मैंने तो फोटोज ही हाँ. दिखाए थे। So this is one of the upcycled project that I had done. राइट। है ना. I love ब्यूटीफुल। these splatters. ये actually splatters है, using our chalk pens, and they look हाँ, like those cherry blossom, है ना. And प्रिंट में। हाँ हाँ this is our transfer. This is हाँ। also our transfer. So it is a अच्छा, mix of our, transfer sheet napkins and and transfers। napkin and transfers. So this was a Beautiful. rasgulla ka dabba, and I upcycled Nice. that. मेरे बाकी projects कहाँ है? Hi, Neeta. I can see a lot of highs popping in also. हम लोग देख रहे हैं, डोंट वरी गाइस, इट्स जस्ट दैट बात कर रहे हो तो तभी हम रिप्लाई नहीं करेंगे, बट बाद में हम डेफिनेटली करेंगे। Hi everyone, thank you for joining. ये वो I had, um, हाँ, बुक। तो बैक साइड आई केप्ट इट एज सच, ओके। सो दैट आई कैन शो यू कि ऐसा था बुक, है ना. हाँ, और उसको हमने यूजिंग आर napkins, so two लवली। napkins I हाँ, combined and I made a nice book cover out of it. राइट। So ब्यूटीफुल। this is अच्छा, ऐसा था, मुझे एक्चुअली फोटो से लगा एमडीएफ का बुक है, बट वो एक्चुअली ना वो ना पूरा डायरी है, ना चिपबोर्ड वाला। नॉर्मल जो अपना डायरी आता हम्म। है ना, इट इज हार्ड बाउंड हार्ड कवर डायरी. वाला डायरी। हाँ हाँ, हम्म। हार्ड कार वाला. सॉरी, आई एम गोइंग हियर एंड देयर. एकदम से इम्प्रॉम्प्टू मेरे दिमाग में आया कि आई कैन शो दीज टू. हाँ, नहीं लेकिन अच्छा, एक्चुअली मेरे को भी स्ट्राइक नहीं हुआ, मैं अगली बार स्नेहा और अनामिका को बोलूंगी कि रेडी रखें। हाँ, लवली है, ये मेरा फेवरेट वाला लड़की। इसको मैं कैमरा फ्लिप करके भी दिखाऊंगी सारे प्रोजेक्ट्स, बट या आई जस्ट वांट टू शो या यू देयर. ब्यूटीफुल। एंड एक और है वो, मेरे क्रॉकरी यूनिट के अंदर है द ट्रे. सो आई हाँ मे बी वंस हाँ। दिस इज डन, या I'll maybe show you that also. राइट। So today, because we are introducing a challenge and all too, हाँ, मैं so चैलेंज भूल ही गई बोलना, सो आई टॉक। हाँ, आप बोल लो, फिर मैं लाइव में वापस बोल दूंगी बीच तो बीच हम में। एक गिव अवे कर रहे हैं, and all of us will be selecting two winners each. So I thought I'll do something simple so that people know that ऐसे necessary नहीं है कि you do layers of mixed media and all those complex things only will work out. Very simple बट सुंदर, एकदम आराम से आपको कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वैसे कुछ दिखाने जा रही हूँ. Obviously I am a mixed media lover, so my राइट। inclination is there always, but या it doesn't mean that we do not like simple things like the book cover that I showed you, the Buddha that I made, that was very simple, very elegant. मतलब राइट। एकदम छोटा सा वो अपना अपने आप में एक वो काफी क्यूट project था, and my brother या also loved it, so I gave it off to him. So yeah, it is going to be a simple home decor project.
So I'll maybe flip my camera and I'll show you. Yeah. This won't take a lot of time also, I feel. Let's see. That's what I Okay. have in mind. But they Never say never वाला jinx नहीं करते हम. yeah, right. So I'll just flip my camera. Yeah. Yeah. Can you guys see? हाँ. मतलब थोड़ा ऊपर का आधा हाँ आधा दिख रहा है. वो मैं maybe the ऊपर entire नीचे thing करते रहो. won't come. हाँ तो Okay. I'll anyways be doing single pieces at once. Okay. I think So this is the that's nameplate or a wall decor. People हाँ already have it'll be questions. like a hanging wall decor piece. है ना? Okay. So हाँ. it is MDF ka base and it'll have these three parts which I'll be once the project is done इसमें वो thread डाल के I'll combine it and then it'll be like a wall hanger. Beautiful. Interesting. ये हमने कभी किया नहीं है लाइफ में. So हाँ something new. So, and I have this thing, कुछ MDF cutouts ही है ये भी. This I had हाँ. actually got it, custom made काफी time पहले, I think 3 or 4 years back. लेकिन कभी use नहीं किया, so I thought I'll maybe use that हाँ. in So this. what does it say? Remember? Uh, Remember that you are amazing. Oh, lovely. So I'll be using this transfer. This This is napkin. yeah, Transfer की birds इतनी food. आदत पड़ी है ना. Sorry, this napkin. Yeah. Yeah. Uh, so yeah, this one, and I will be combining it with this napkin, right? So Okay. this is wildflower 2, and this is birds 4. So, okay. Cool. Excited. So let's get started. Yeah. I will be doing everything from scratch so that Ah, all of you can see the entire all process. the steps. Yeah. Yeah. Cool. And I think So people can also see कि कितना time भी लग रहा है. So that's a good yes, thing. right. So I'll be adding gesso. This is the first step for any project. Um, the gesso I'm using is CrafTangles white gesso. Okay. So while she's I'll just check all the comments that had come in क्योंकि काफी सारे comment आ गए थे. So thank you guys first of all for joining in. Thank you. Hi Suprita. Yes, April release was a blast. मतलब we did release after almost 3 months, guys, because as I said, in our release life काफी कुछ चल रहा था and we wanted to. Then we decided कि हम एक बड़ा release ही कर देंगे rather than छोटा release. और इसीलिए for those of you who have not seen our release, we did almost 3 hours live because we had so many products and samples to show you. इस बार हमने हमारे DTOs को भी kit पहले ही भेज दिए थे. So they have made a lot of decoupage projects using these napkins. There is Made in India decoupage napkins that we launched. And अगर आप वो live देखोगे तो उसमें we have shown you a lot of products. As always, अभी पार्वती ने आज की live में she is showing in the start itself she showed you a lot of projects that she had done for demo. She'll probably be showing you at the end of the video as well. Hopefully, we'll have time by then. But today we are making a decoupage project using these napkins, and we are making a wall decor out of it. Now, as she said, हम लोग challenge की बात कर रहे थे, right? So, for those of you who want to know what is the challenge, on CraftAngles account, check our pinned post. There is a one pinned post on our Instagram account, जहाँ पे हमने सारे rules डाले हैं. So we are by the end of 1 month, which is on 5th or 6th of May, we are going to select 8 winners who have made projects using CraftAngles. So it could be alcoholics, it could be watercolors, it could be a newly launched stuff, it could be stickers, it could be anything. As I have always said in my lives, we do a lot of products. We just don't do decoupage or we just don't do mixed media. हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हमारे कस्टमर्स भी बहुत सारे मिक्स एंड मैच है कि हमारे पास वाटर कलर आर्टिस्ट है, हमारे पास मिक्स मीडिया आर्टिस्ट है, अल्कोहलिक आर्टिस्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो. द आइडिया इज दैट यू हैव टू यूज क्राफ्ट एंगल्स प्रोडक्ट एज अ मेन फोकल पॉइंट ऑफ योर प्रोजेक्ट.
और आपको फोटो जब आप लोगे, एक प्रोजेक्ट की फोटो डालनी है और एक प्रोजेक्ट की जो आपने सप्लाईज यूज किए हैं क्राफ्ट एंगल्स की उसकी साथ डालनी है, ताकि हमें पता चले कि आपने कौन से क्राफ्ट एंगल सप्लाईज यूज किए हैं. And you have to tag all the accounts that are part of the post. Again, all the rules are guys clearly mentioned. Just check that post out. उसमें हमने description में भी डाला है, caption में. और अगर आप right swipe करोगे तो second image में भी we have added all the rules. So you can just go through that rules and participate in that challenge. It's a 1 month challenge. We just started it yesterday. So it's going to go on for almost a month. So that's our challenge. That's just a way for us to motivate people who have bought CraftAngles product and, make something with them and, just so that people को मजा भी आता है हमारा products use करने and you have kind of an opportunity कि आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो ये product के बारे में and at the same time you get an opportunity to win as well. All the winners will get a 500 rupees goodie bag from CraftAngles shipped anywhere in India to your location. आप जो भी हमें लोकेशन दोगे वहां पे आपको शिप हो जाएगा once the winners are announced. So that's the winning giveaway. So hi Kavita, thank you. I can see a lot of comments from Kavita and Shalu. Hello, Hi flamingos. Yes. Kavita, So hi today we are going Shalu. to, yeah. So today we are using two napkins as Parvati showed them. One is flowers and one is flamingo. एंड या रूल्स आर वेरी क्लियरली मेंशन गाइस इन द पोस्ट. तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है चैलेंज में तो आप वो पोस्ट देख सकते हैं. एंड हमारी शेयर एंड विन की चैलेंज जो नई चालू हो रही है वो मंडे से हो रही है, क्योंकि मंडे को मैं पुराने विनर्स अनाउंस करूंगी. सो अगेन हम पोस्ट डालेंगे जिसमें हम सारे रूल्स क्लियरली मेंशन कर देंगे. सो दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन शेयर एंड विन कैन ऑल्सो गो थ्रू दोज. The project you showed at the date of the release was bomb. Thank you guys. Thank you Suprita. So yes, we put in a lot of love and effort in that projects. So in case guys, trust me, you should check those projects out. हमने काफी सारे अपनी stories में भी हम लोग डाल रहे हैं एक एक करके. And you can also check our stories जहाँ से हमने अपने release की link वगैरह भेजी है. Those who are on our Instagram channel, the CraftAngles channel that we have created, we always make sure कि हम सारे अपने YouTube के lives, channels, etc. we posted there. Okay, so that is also there, and I'll still ask someone from my team today to post that live link in the story so that you can check out that live again. But just go on our YouTube channel, which is HNDMD, and see the first line. You will see it on our account page itself, and you will see all the products that we have launched. All the products that we have launched are all made in India. We are super proud, as I said, जो आज का showcase है is the Decoupage napkins that we will be sharing, and these are all made in India Decoupage napkins that we have just launched. So I hope मैंने सारे लोगों के जो भी जिन्होंने मिस किया है दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आज हमारा लाइव किस पे होने वाला है एंड ऑल दैट. And in case you missed out, you can always, all our lives are stored on our Instagram and the artist's Instagram. So you can always go back और आप वो Instagram के live को start से देख सकते हो या YouTube live को भी start से देख सकते हो. हम अपने सारे live store करते हैं. Thank you, Suprita. Paro, you are a magician, art magician, is what Suprita said. Oh my God, big compliment. Thank you. अब Not a अब magician. मजिशियन वर्दी प्रेशर आ गया. अब मजिशियन वर्दी हाँ, प्रोजेक्ट भी ऐसे बनाना पड़ेगा. ऐसे ऐसे बातों से प्रेशर बन जाता है लिटरली. बट नो, बिग कॉम्प्लीमेंट. एंड नो यार, मैजिशियन तो बिल्कुल नहीं है हम में से कोई भी. हम हाँ कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा लेके आए, because we हाँ love what we do. I think that's the main differentiator. या कि जो भी हम करते हैं एकदम मन से प्यार से करते हैं, बस वही एक करेक्ट. डिफरेंशिएटर है. बाकी जो हो जाता है बढ़िया, जो नहीं हुआ माफ कभी करना. कभी हाँ, कभी कभी फेल्स भी होते हैं जो बहुत लोग शायद देखते भी नहीं होंगे. हमारे फेल हम दिखाते भी नहीं राइट, होंगे, बट या राइट. सो हाँ. सो मेरा ये आइडिया है कि हम्म. आई विल बी यूजिंग, द people may have this doubt कि कैसे select करते हो, right? So I don't want to take these couples, क्योंकि अभी I want to
maybe use them for something else, like couple वाले कुछ projects में कुछ वैसे मैं use करना चाह रही हूँ, because they are beautiful in that ways. And I need 3 pieces, right? Because मेरा 3 तीन MDF का वो है, हाँ right? पैनल So I want something similar, जो similar color palette में है. So because of that, I'm choosing this one here, this one here, and this one here. This ओके has more of gray and blues, so ग्रे maybe I'll या avoid that. I want more of, greens and yellows and pinks. पिंक्स एंड So या yeah, so that is something that I'm playing around with अभी के लिए. ओके और आज Now, आपको पार्वती स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक दिस इज द फर्स्ट लाइव हम कर रहे हैं right, प्रोडक्ट के साथ right. So अभी first एक फ्लैमिंगो को मैं ले रही हूँ, राइट. फॉर दैट आई एम जस्ट डिपिंग माई ब्रश, जो नॉर्मल ब्रश है, दैट आई एम डिपिंग इन वाटर, एंड आई एम सिंपली moving it around. Ensure that you are leaving enough gap between your design. And जितना आपको प्रोवाइडेड डिजाइन में चाहिए, हाँ, वो उससे थोड़ा सा ऊपर ही आप कट करना. ठीक है. दिस इज a good way of cutting because this will give you an uneven cut. तो डेकल लुक एकदम, थोड़ा हाँ, राइट. तो वो सिजर से कट करते हैं ना, तो थोड़ा वो एकदम डिफाइंड कट आता है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक. सो आई प्रेफर टिश्यू नैपकिन्स में, आई प्रेफर डूइंग दिस. सो सो अब यू कैन सी. देख सकते हो सेम एज नैपकिन पानी लगाने के बाद इट हैज स्टार्टेड धीरे धीरे डिसइंटीग्रेटिंग एंड देन यू कैन सेपरेट आउट द डिजाइन्स दैट यू वांट. So राइट, this is just water and brush applied on the napkin. राइट. And it is very thin paper, guys. Matlab, you can't even imagine how thin this is. Matlab, as हाँ thin मतलब as ये उड़ता है. napkin. Actually it starts Yeah, floating around. I can't switch on my fan if I have, Yeah, these papers around. So I have my AC on for this reason. yeah. कि उड़ नहीं जाए. Now, what I am using here is a file sleeve. So जो हमारे normal files आते हैं ना, I'll just show you. तो Now ऐसे this वाले जो is a normal technique. Yeah. normal file आते हैं, this is Mahi's file. So हाँ. तो इसमें से एक sleeve मैंने निकाल दिया है, ठीक है, and that I'm using here. And Now what this I'll do is is, a perfect technique for no wrinkle, guys. So right, what she's showing you is कि आपको no to negligent wrinkles आएंगे using this technique. Hi right. Sneha. So what I'll do is I'll keep this design ulta. Okay. So your real design is upside down now. Okay. Yeah. And now on top of this, I will spray some water. Okay. And now you can see some air bubbles and all are there. So what I tend to do is I take a flat brush like this, okay, and then I very carefully I brush out those Bubble. bubbles and any wrinkles, if any. So now this has no bubbles, no wrinkles. Okay. Now I will, यहाँ पे है अपना पेपर, मैंने उसको उल्टा किया, and I am placing it over the MDF plank that I'll be working on. तो अभी तक
ग्लू पिक्चर में आई ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ हाँ, पानी से ही चिपका के उसको डाल रहे हैं. right. So now we have it on our MDF plank. Now हम्म, if you see closely, इसमें हल्का हल्का सा बबल इधर उधर आपको दिख रहा है, right? But correct. because we don't have any glue or anything in place right now, I'll again take my brush, the flat brush, है ना, और हम्म, very gently, because the paper is very thin guys, so don't do it मतलब एकदम बहुत ऐसे with hard hands or anything like that. Very gently with soft hands, एकदम ऐसे करके हम्म, remove all the bubbles and wrinkles if any. yeah, Now if you see, देख रहे हो, there's yeah. not a single wrinkle, not a हम्म, single bubble. हम्म. Okay. And I also love No, the no. vibrance of the colors. I cannot look, but देख के Yes. पागल हो रही हूँ colors. इतने एकदम beautiful. इतना ब्यूटीफुल है this one. हाँ. And if you see guys, ये जो borders है, right? If you want, you can take off more of the border out if you want, but I'm okay with this much, and I'll be blending out some chalk paints and colors हम्म, out from this, so I don't mind having the borders. But because we did that white जो पानी वाला brush से किया था, it's not very straight sharp edges, so right. it looks very natural kind. Yeah. तो वो एकदम अलग से नहीं दिख रहा है. And हाँ. once we stick this and everything, those edges won't be seen as such. Right. Okay. Right. Now, next thing what we need to do is our decoupage glue. ठीक है. Right. Maybe I'll keep this aside and put all my हाँ. elements first, फिर glue and then करना. I'll हाँ एक साथ glue कर लूंगी मैं. So तो next I'll take while my she is showing, मेरे को सिर्फ एक बताना था कि guys आप जब brush use कर रहे हो ना, you have to be careful that it's a soft bristle brush. So if you see, this is the soft bristle brush and this is what you use for chalk paint. This is a hard bristle brush. So पहली चीज, use a new brush. Don't use the old brush to do that sticking part जो कर रहे थे ना. उसके लिए आप एक नया ब्रश लो जो completely unused हो, और हर बार आप उसको अलग रखो, और वो सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश होना चाहिए ताकि वो आपका पेपर ना फटे, बिकॉज एज वी सेड द पेपर इज वेरी थिन, राइट. सो अगर आप उस पे ऐसे मोटे ब्रश से ऐसे करोगे ना तो पेपर फट जाएगा पानी के साथ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज सॉफ्ट ब्रिसल्स. And what Paro is showing, that technique personally हम सब ने try किया है, and it is one of the like a foolproof technique. Probably starting में आपका शायद एक दो बार पेपर फटे, but I think that's the easiest technique that you will get to apply napkins or these tissue decoupage napkins. The only thing you have to take care, one more thing is कि आप you know टिश्यूज आर इवन मच मोर सॉफ्टर, राइट. एज अगर आप मेरा लाइव जाके देखोगे तो हमने बात की है कि दिस पेपर इज स्लाइटली स्टिफर देन नैपकिन. सो आपको नैपकिन का पतलापन मिलता है, बट दिस पेपर इज मच मोर वाटर प्रूफ एज कंपेयर टू द नैपकिन. सो ऐसे करने के टाइम फटता नहीं है. बट एज पार्वती सेड, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसे 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 ना करो जोर से. ऐसे ऐसे करोगे तो फट जाएगा. मेरा भी स्टार्टिंग में फटा है. So just letting you guys know. yeah, you have to have a very gentle hand while working with this. Same as जो decoupage papers है, same as decoupage napkins है, वैसे ही this is slightly thicker when compared to napkins and easier to work than napkins. I've worked with napkins and I hated working with them. That's one of the Yeah, reasons I never went into decoupage exactly. as such. So, मतलब there is no but perfect science कि आपको wrinkle free हर बार मिले, or you have to have a patience of a saint to do that. right. And but this product, I can tell you, matlab, I am enjoying working with this one. Matlab, you can
इमेजिन राइट, जो सैम्पल्स हमने बनाया वो भी एकदम लास्ट दिन में, आई थिंक आई हाँ मेड 2-3 प्रोजेक्ट्स इन वन गो, एंड माय आपने हस्बैंड आस्क्ड स्नेहा मी। ने सबने 2-2 3-3 दिन में ही बनाया, क्योंकि आई रिमेम्बर आप लोग बॉम्बे ही आए थे ट्रिप के लिए। अनामिका राइट, को भी काफी लेट पहुंचा क्योंकि वो थोड़े दूर रहते हैं, तो उन्होंने भी आई थिंक 2 दिन में ही सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, तो सबने 2 दिन में ही प्रोजेक्ट्स बनाए। सो राइट, सो यू कैन इट्स, अंडरस्टैंड द yeah या इट इज speed with वेरी which this इजी, worked out. या Yeah. it is very easy to work with, and the satisfaction that you get with वो no wrinkle वाला जो feel आता है ना, वो हाँ एक अलग ही लेवल का satisfaction है। हाँ, ये मेरा फेवरेट फ्लेमिंगो है जो मैंने भी इधर यूज किया है। आई लव दिस फ्लेमिंगो। I wanted to use this, हाँ। जो मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट्स में ही थे, then I saw हम्म। that you used, so I thought कि हाँ। ठीक है, samples में use नहीं करते, let's do it in some other project. And today when I was sitting with कि कैसे क्या करना है, I thought this will यस। look very nice and vibrant, so let's go with this. So ग्रेट। I think Kavita had asked कि अभी ये dry brush है क्या? No, it is always wet brush. So I have ample amount of water in this, and I brush all the bubbles out. I brush all the wrinkles out. So ultimately, there are zero wrinkles and zero bubbles inside my uh, paper. तो आप इस स्टेज में भी, इफ यू वांट, यू कैन ऐसे ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो कुछ एक्स्ट्रा, अगर आप चाहो तो। आई हैव दिस हाँ। हैबिट, so I do that. This is two done, and now we'll do the last and final one, यस। which is this flamingo. So while she's removing the paper, I'll just look at the comments. Thank you, Sneha. It is a beautiful design. And Suprita is saying this is the reason why I called Paro art magician. So thank you for your kind words. Second time while removing bubbles, it was dry or wet. I think Paro already replied कि वो wet brush था. Thank you, Mr. Dinesh Tripathi ji. Thank you. Papa, So he said looking good. हाँ. So he's my thank you. father-in-law. Yeah, Yeah. thank you, Papa. So thank you, Neeta. Indeed, the project. So, guys, in case you missed out our two last time's live, we highly recommend check it out. उसमें सबके projects है using these newly launched napkins. Of course, हमने बहुत कुछ और भी किया है release जो शायद shadowed out हो गया. हमने ऐसे stickers वगैरह भी launch किए हैं. आप check out that live. We have done a huge live जहाँ पे हमने सब discuss किया है. Sneha says even you can slide the file folder. सो आई थिंक स्नेहा आप हमें अगले लाइव में वो स्लाइडिंग वाला दिखाना। Yeah, अच्छा है, you मतलब can सब अपने slide अपने it तरीके also. से करते हैं, तो आई थिंक सब पीपल विल सी कि आप कितने इजीली नैपकिन अपने क्राफ्ट एंगल्स डिकोपेज नैपकिन यूज कर सकते हो इन डिफरेंट वेज। सो स्नेहा यू कुड डेफिनेटली शो दैट मेथड एंड थैंक यू। दिस टेक्निक इज इंडीड इजी गाइस, मतलब आई नो lot of people have that, even I have that preconceived notion that napkins equivalent wrinkles, equivalent tears, and I have struggled. Like I have used it on journaling, I have used it on coasters, and I struggled. So same as Parvati, that's one of the reasons why I used to not love decoupage as much as I do mixed media, journaling, and all those things. So that's why I'm now I have loved this. As I said, I have done so many upcycle. अब तो मैं literally आज ही मैं गौरव को बोल रही थी कि मैं बोलने वाली हूँ पापा को, पापा के सब फ्रेंड्स है ना जो मतलब ऐसा बॉटल्स वगैरह उनके पास रहती है, तो मैं सबको बोलने वाली हूँ कि आप है ना सब बॉटल्स रखना अभी मेरे लिए, तो आई एम गोइंग टू बिकम इवन मोर बिगर कबाड़ी वाला टू डू इवन मोर अपसाइकल प्रोजेक्ट्स with these napkins. They are so much fun. Guys, trust me, once you start, they are highly addictive, just like transfers. Thank you, Nadia. We all love this flamingo. I think this is one of the most favorite design in all the ones that we have launched. Ye dragonflies and Buddhas are loved by people. Uh,
Yes, Suprita, thank you for placing order. Awesome. Cool, Sneha. Next week we will wait. So next week we have another Instagram live with Sneha. So there we will see Sneha's technique and Sneha's takes on our decoupage napkin. And उसके बाद हमारे तो back to back live है with Anamika, where we will be like Anamika is going to show you how she is going to use napkins. So as I said, lot of lives also coming up apart from YouTube and Instagram tutorials, guys. And all of these are going to be absolutely free, which is our USP as a brand, I feel. We don't charge you money for classes and all that because we want you to genuinely love and enjoy this product. Can you please share the link of the sentiment you used with your flamingo coaster? Acha, ye wale. These, no? So, Pranita, you can just search pre-cut sentiment stickers on our website, CraftAngles pre-cut sentiment stickers. या फिर what I'll do is just DM us. I'll ask someone from my team. क्योंकि Instagram पे अगर मैं comment डालूंगी ना तो वो link नहीं चलेगा. So just DM us. I will ask someone to send you the link, and we'll also put this on story. Okay, so आप story से भी उठा लेना या फिर just search CraftAngles pre-cut sentiment stickers on our website, which is www.hnDMD.com. And while we are at this, I just wanted to show you for all you resin lovers out there कि हमारे सारे stickers resin पे भी चलते हैं. This I have done on liquid glaze, but resin is exactly similar. This is one part formulation जो हम glaze use करते हैं as a top coat on our coasters. ऐसा ही रेजिन भी चलता है टू गिव यू दिस रेजिन लाइक फिनिश और इसमें हमारे स्टिकर्स चलते हैं सो आप हमारे स्टिकर्स वहां भी यूज कर सकते हो हमारे नैपकिन्स भी यूज कर सकते हो बिकॉज दिस वाज अ कंसिस्टेंट क्वेश्चन वी गॉट इन आवर लाइव्स. Okay, so I have all my flamingos on. Now I'll add some flowers from these. ओके I don't want to, overcrowd this. So I'll be ओके using very little flowers. पार्ट पार्ट So, ऐसे थोड़े थोड़े हाँ, पार्ट एजेस पार्ट पार्ट. right, right. ओके Okay. ओके. So, सो देयर इज अ क्वेश्चन हियर. कविता पूछ रही है बाय लुकिंग इट अपीयर्स इजी बट करके पता चलेगा डिकूपेज आई ट्राइड फॉर रिंकल्स डिडंट ट्राई मतलब आई थिंक रिंकल्स सबके लिए मतलब ऐसा टर्न ऑफ था मुझे लगता है डिकूपेज से बट नाउ आई थिंक आई गिव इट अ ट्राई अगेन. सो पार्वती मुझे जस्ट टू गेट एन आइडिया बिकॉज आई नो आई ऑल्सो आई थिंक आई हैव डन 5 to 10 decoupage projects before I stopped decoupage using napkins. आपके ऐसे मतलब कितना आपने किया होगा जस्ट टू गेट एन आइडिया कि उसके बाद आपको कितना टाइम लगा टू गेट हैंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. no, आई जस्ट वांट टू I अंडरस्टैंड द साइकी. I have done decoupage projects, but मेरा बहुत कम ही numbers होंगे, maybe like 10 odd projects उतने ही किए होंगे मेरे मैंने. पास Yeah, so I've not done a lot of decoupage projects or anything of that sort. सो उसके So बाद आपको main, इसको हैंड्स ऑन करना कितना डिफिकल्ट था कितना इजी था. आई नो द आंसर बट आई वांट यू टू गिव आंसर टू पीपल yeah. इसीलिए आई एम आस्किंग. I told you, right? Decoupage was a big turn off for me. So only when it is, very much required. Like मेरा name plates का orders आते हैं मेरे हाँ पास. So राइट. in those cases, if some particular designs they want कि मुझे birds चाहिए, मुझे ऐसे वाला लड़की चाहिए, ऐसे कुछ चाहिए, ऐसे specifics कुछ आता है, and if I can find that only in a napkin, right? It is only then that I go into decoupage. So I am kind of a perfectionist, you know that, right? So मेरे को थोड़ा सा वो दिक्कत रहता है, but I try my best and try to get it डन एज मच एज पॉसिबल. और मैं कोशिश मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाता है जस्ट टू इंश्योर दैट देयर इज नो wrinkle and all those things. So I'm not a big fan राइट of decoupage, but ये particular technique, ये particular product, this is damn easy to do, guys. मतलब you all know, right? You have never seen me doing a decoupage project till now. राइट. I'm या all सो mixed media person. एग्जैक्टली
Exactly. So That's what I was going to get into कि मैं स्नेहा और पार्वती आई थिंक हम तीनों का स्टाइल बहुत सिमिलर है. हम लोग हार्डकोर मिक्स्ड मीडिया जर्नलिंग वाले लोग हैं. मैं तो फिर भी मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है. लाइक पार्वती का रीजन वाज दैट शी डज शी सेल्स, सो इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट शी डज इट. Sneha I know does exhibitions, so she may be doing it for exhibitions. And I don't know whether Sneha likes it or not. उनकी स्टोरी हम अगले लाइव में सुनेंगे. But in my case, though, personally, I do all the art forms क्योंकि I do alcohol ink, watercolor, everything because we sell that. And, at the end of the day, I have to make reels for my brand. So I do learn. But decoupage napkins was personally a big turn off. And all these, like even the products that I have made, this is like my fourth or fifth attempt in this napkins. लाइक मेरा पहला एक दो मैंने कर्व सरफेस पे ही, मतलब मैं भी हीरोइन हूँ तो मैंने पहले रिवर्स डेकोपाज किया कर्व सरफेस पे. वो एकदम 100% नहीं आया. फिर आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स एंड दैट इज हाउ आई लर्न. एंड दिस वाज आई थिंक विद इन फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट आई mastered how to do it without wrinkles and all that. You will see me purposefully create wrinkles also in art journal and mixed media. That is because I like wrinkles and old looking things in my mixed media vintage projects. So हम वो भी मतलब we'll be sharing those techniques also जहाँ पे आप purposefully wrinkle look भी ला सकते हो using napkins, just like हम लोग कैसे ट्रांसफर्स के साथ टॉन लुक करते थे, which I think we were one of the people who had shown you how to create that cracked look with transfers. So you can use, again, this is, I think, my first attempt was this on a napkin. And this was without any blending color. This was just on white, sorry, not napkin. This is a cloth bag, the cloth bag by CrafTangles that we sell specifically for decoupage. This is the painted one. So आप ये सब हम लोग भी फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड टाइम भी ट्राई कर रहे हैं. तो अगर हमसे हो गया तो आपसे भी हो जाएगा. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ट्रस्ट मी कविता, आप भी कर लोगे. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट. it is very अगेन आई easy, कैन सी लॉट ऑफ, guys. या सो डोंट वरी. मतलब वो माइंडसेट के साथ मत चलना कि डिफिकल्ट है. आप कर लोगे. बट ये टेक्निक करना, मतलब मैंने लिटरली 7-8 टेक्निक ट्राई की है. बट दिस टेक्निक आई फील इज द मोस्ट beginner friendly and most foolproof in terms of not getting any wrinkles and giving you a consistent result. अभी अगेन पीपल मे हैव दिस डाउट कि मतलब आप ये कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा फ्लावर कैसे कहा जा रहा है एंड Right, ऑल. सो right. बिकॉज these two are relatively patla patla flamingos, I am giving more flowers here, and because Okay, she is taking up more space, I'll be using a smaller design here got and it. something that is a bit more contrasting to the existing colors, right? Oh, interesting. तो इसमें बिल्कुल येलो कम है, so I'll be using some yellow here. इसमें I had less of pinks and other things, so I'm putting some pinks here. And here there are not much of blues and other things, so I'll Hmm. go with blue here, you know. So Right, depending on the density of the elements, I am deciding what goes right. where. Cool. So काफी सारे as और बीच में comment मेरे miss हो गए. So I'm just reading through those. Once I'll receive it, I'll use it on art journaling. Definitely, definitely. Suprita will wait. And abhi to, you participate in our challenge if you are using our products, take pictures and do that. We have shown you also, like, since I have diary here, I'll show you कि ये आप journaling में भी use कर सकते हो. This is napkin that I have used on paper. Okay. So that is also possible for those of you who are art journal, mixed media, journaling lovers, because as I've said time and time again, हमारे पास बहुत mixed crowd आता है. We just don't have decoupage people. So, we try and do it on all the mediums that we cater to. So अगर आप हमारा live देखोगे तो you'll see that we have done it in mixed media. We have done it in decoupage, like reverse decoupage दिखाया हमने आपको, samples में upcycle दिखाया है, plastic दिखाया है, MDF दिखाया है, chipboard दिखाया है, पेपर भी दिखाया. तो ये सब मीडियम्स पे आप हमारे नैपकिन्स यूज कर सकते हो. Happy to know that, Pranita. Thank you for being a long time customer. We always appreciate, and I hope you like our Made in India decoupage napkins. That is something, this year at least I feel that is going to be our hero product, and that is going to be something which
we are going to be extremely proud about as a brand to launch Made in India Decoupage napkins. So I hope, you also like it. I love mixing different tissues and even transfer. बिल्कुल स्नेहा. So मतलब I saw ना आपने वो 4 transfers use किए हैं. So मतलब इंटरेस्टिंग टेक है लोगों का हर डीटीओ का डिफरेंट डिफरेंट. सो आई रियली लाइक कि सब अपनी अपनी स्टाइल ला रहे हैं. Pranita, you have done 200 plus projects. Oh my God, means you are a decoupage pro. We would love to see आप क्या बना रहे हो हमारे napkins के साथ. So do tag us. And this month हमारी challenge भी चल रही है guys. So if you are making any products using CraftAngles, do tag us. You will get a chance to win and हमें भी हमारे customers के product देखने मिलते हैं जो बहुत बार हमें नहीं भी देखने मिलते. तो हमें भी मजा आएगा आपके products देख के. Ah, you do it commercially. Interesting. Have a huge collection of napkins and rice papers from India and US. Awesome. तो अभी हम होप कर रहे हैं कि आप मेड इन इंडिया का भी कलेक्शन बनाएं. अच्छा, you also do it in journaling. Okay, great, Pranita. So Awesome. there is one more artist here live with us. She also uses napkins and journals. Good to know. मुझे ऐसा लगा हम लोग ही हैं ऐसे weird ones. Good to know that we have people with us. Nice to know, Pranita. Yeah. So, yeah, Yes, wrinkles journaling में मजा आता है स्नेहा. Please go ahead, Parul. I've tried to place, the flowers as organically as possible. So Right. if you see, मैंने वो नीचे का पोर्शन एकदम नीचे की तरफ ही रखा है. It is Hmm. not in air, looking, एकदम से कहीं से भी कुछ भी चिपका दिया उड़ types. रहे हवा में. And हाँ. and all the designs also, I've ensured that it looks, organically एक साइड से स्टार्ट होके इट इज ग्रेडियंटिंग डाउन Right. वैसे डिजाइन में रखा है. Okay, now that I have all my tissues on, the napkins on, I'll go in and add our glue. Blue. So this is Right. CraftAngle Decoupage glue. Now, Hmm. uh, I personally like to water it down, and I think it Right. is best to water it down Yeah. if the glue is thick. So if you see, this glue is, where do I show it? I'll maybe just show it here itself. It Hmm. is pretty thick. है ना? Hmm. So if you use it directly like this, it may tear your paper because these papers are pretty thin. So I prefer it to be watered down. So ensure you're using मतलब अच्छा clean water and clean brush, Hmm. and your surface is also clean. So I don't mind यहाँ पे थोड़ा सा white वो है gesso, but I'm sure it won't mix, so it's not going to make much of a difference. And I've watered it down now using some water, and now using a flat brush I'll gently apply the glue from inside out. I personally like to put the glue from within the design, मतलब from middle to outwards. So कुछ by chance कुछ bubble बच रहा हो या if there's any wrinkle or something like that, Right. they will be pushed out. Right. So again, guys, ये अभी थोड़ा milky लग रहा है because that is how the glue is. It is white when it is applied and it will dry clear once Yeah, it is dry. So even though अभी आपको ऐसा लग रहा है कि blur हो गई मेरी designs, don't worry. वो it will once it is dry, it will become clear and the vibrance and everything will come. yeah. Within few minutes itself, you can see that. Yeah. This is an extremely fast drying glue as compared to like other acrylic based glues that you find. हमारा ये बहुत clear था. In fact, इतना fast drying है कि अगर आप
मैं एक्चुअली बड़ा कर रही थी, तो मैं थोड़े अलग तरीके से कर रही थी। पार्वती, आपने थोड़े अलग तरीके से किया, बट अभी मैं ऐसे भी ट्राई करूंगी। मैं एक्चुअली ग्लू लगा के फिर ये कर रही थी, फोल्डर से लगा रही थी। सो हम्म वो भी मेरा मतलब उसमें अगर कभी रिंकल्स आया तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, जैसा आपने जैसे अभी बाद में रिंकल्स निकाला ना, वो मेरा आ जाता था। हम्म सो गुड टू नो कि मैं थोड़े अलग तरीके से कर रही थी, तो दिस ऑल्सो आई वांट टू ट्राई। बट एज yeah आई सेड, वो तो this कभी कभी क्या होता था, मैं कैनवस पे लगा रही हूँ और मैं अपना मीडियम रखने जा रही हूँ, उसमें ड्राई हो जाता था इफ माई कैनवस, लाइक आई वाज डूइंग अ 10 by 12 कैनवस। सो hmm. it is an extremely fast drying glue is what I want to say. Right. I prefer doing it this way. So you Yeah. have, ample time in hand, and you have the flexibility to move around Uh, your, correct. napkin also. Yeah, yeah. The Glue लग, flexibility is very good. हाँ, वो glue लगने के बाद में फिर वो move around नहीं होगा, I feel. Correct, correct, I'm not correct. sure. नहीं होता है, Maybe नहीं once, होता है, नहीं maybe होता है, you can. मतलब बहुत you have to be extremely careful. Hmm. मतलब नहीं होता है, इतना नहीं होता है जितना आपने कितनी आसानी से निकाल दिया वो एक दो रिंकल जो आया था फर्स्ट फ्लेमिंगो में, उतना Right. इजीली नहीं होता। सो आई थिंक दिस मेथड इज इवन बेटर। स्नेहा इज सेइंग शी ट्राइड बोथ। वो मेरी तरह सारे कीड़े करके स्ट्रगल, मतलब क्योंकि आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि ऐसे कर देंगे ना तो ज्यादा डबल सीलिंग वीलिंग का टाइम मेरा बच जाएगा। सो आई वाज डूइंग इट लाइक दैट। आई एम अ लेजी पर्सन, तो मैं हमेशा शॉर्टकट पहले ढूंढती हूँ मेन काम से। तो बट दिस आई फील इज मच बेटर। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू सी। एंड दिस ये मुझे अच्छा स्टेज लगा। मैंने हाँ, अभी कितने 5-6 प्रोजेक्ट्स बना लिए ऑलरेडी राइट। एंड दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन. हम्म। मैं अगला क्वेश्चन मेरा वही था कि आप ऐसे ऊपर ग्लू लगाते हो, बिकॉज आई नो ट्रेडिशनली नैपकिन्स क्या सीप इन करके ले लेते हैं। सो आई वांटेड टू आस्क यू कि ये पेपर के साथ भी आपका अच्छे से चिपक जाता है ना आफ्टर एडिंग ग्लू? चिपक रहा है. हाँ, Maybe because I'm watering down my glue, so क्या that water seeps in. Water तो seep in सीपिंग हो ही थ्रू, रहा या है, प्रॉब्लम। right? So that बट helps. दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि अगर आपकी ग्लू बहुत गाढ़ी है, ये मैंने लाइव में भी बोला था कि अगर आपकी ग्लू गाढ़ी है, जैसे आवर ग्लू इज कंपैरेटिवली थिकर, सो यूज इट विथ वाटर, डोंट यूज इट डायरेक्टली। नाउ आई डोंट नो बाकी ब्रांड्स का, सो यू विल हैव टू डू अ ट्रायल एंड एरर एंड सी। Pranita, then you seem to be pretty practice wali bandi. She's saying that now I do directly. Like she doesn't use any of the method and she does it directly. उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, मेरे को तो डर लगे। हाँ, मेरे But को भी as you said, you डर have लग done गया. 200 plus projects and you do it commercially, then I'm sure that you would be pro at doing them directly. नहीं, I'm sure even Anamika would do it directly. उसको डायरेक्टली, भी या ये सब मैं करने की एक्चुअली जरूरत. अभी वही सोच रही थी कि अभी मुझे देखना है कि अनामिका इसको कैसे यूज करेगी She इन द will be थर्ड लाइफ doing जो it हम कर। directly because या she is a pro at decoupage. या So this या is for beginners like us, and I हाँ, think many of the people who are live here with us may be beginners. या So उन सब के लिए this is one of the easiest way to work with. So that's the point of showing this क्योंकि this helped us. We are या no decoupage experts. मैं तो बिल्कुल या भी नहीं हूँ. तो मैं and भी नहीं हूँ, मतलब डेकोपाज इज समथिंग, मेरा तो मिक्स्ड मीडिया कार्ड मेकिंग जर्नी, आई लाइक ऑल दैट। मतलब डेकोपाज आई डू इट बट ओनली फॉर द सेक ऑफ माय ब्रांड, जितना मैं करती हूँ, बाकी नॉट अ लवर। बट दीज नैपकिंस अभी जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव अ डिजाइन से एंड ऑल दैट, तो मैं सारी वो डिजाइन ला रही हूँ जो मुझे यूज करनी है इन अ वे। तो बड़ा मन होता है मुझे भी यूज करने का। so तो I have आई glued down या all ओके। my flamingos and the flowers. I let them इट dry. इज ऑलरेडी लुकिंग प्रिटी एक्चुअली। मैं भूल गई, स्नेहा भी बोल रही थी, मैं भी बोल रही थी कि इवन विदाउट ब्लेंडिंग ये ऐसे ही इतना सुंदर लग रहा है। इवन प्रणीता, आई कैन सी हर कमेंट जस्ट पॉप्ड अप राइट नाउ दैट दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लाइक विदाउट ब्लेंडिंग इट इज रियली लुकिंग गुड राइट You नाउ।
कैन Of course, एक्चुअली blending से लीव सब इट everything ऐसे. will come together. हाँ, Yeah, ऐसे भी अगर आपको छोड़ना है तो यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो. right, बट right. क्योंकि वो मिक्स मीडिया वाला थोड़ा कीड़ा है तो अपना हाँ. थोड़ा सा वो blend. ओके, अच्छा अभी मिक्स मीडिया वाला कुछ आने वाला है इंटरेस्टिंग. नहीं नहीं नहीं, मतलब वो कीड़ा रहता है ना अपने हाँ, अंदर की, मतलब खाली नहीं थोड़ा कुछ छोड़ना है, करना है. कुछ और हाँ ना और डालना है हाँ, वैसे. मतलब हाँ, पूरा तो नहीं करेंगे अपन, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो अपने को ऐड राइट. करना ही बनता है. या. I'll be using some chalk pens. These are my chalk pens from CraftAngles. तो वो blending के लिए मैं chalk pens use करूँगी. But ओके. for now, for these, MDF cutouts, I'll color them with some dark chalk pen. I think I'll go with black itself. Black सबके साथ अच्छा ही लगता है. So I'll go with करेक्ट. black. So while Parvati is getting, I have missed out a few comments, so I'll just check that. Potlies are looking amazing. Thank you. Okay, so you're using black gesso. Yeah, Okay, I don't have black, chalk paint with me, so I'll use black okay. gesso. Pranita का एक comment आया, you could also try turquoise. हाँ, I was thinking dark pink भी कर सकते हैं, turquoise भी कर सकते हैं, right? और maybe I can use this also. हाँ, ये भी Blue velvet. एकदम dark. Yeah, this is also quite vibrant, but मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो जाए कि अलग से वो दिखे. कोई नहीं, आप beginner friendly रखो. Yeah, Go with let's. the safer option. This will also look good, and I think हाँ, this may also look good. These are dark colors, okay. so Uh, I think it's your father or mother, C.K. Premchandran, right? yeah, my dad. So he's saying did it very nice. Keep it up. Thank you, uncle. Thank you, Acha. In Malayalam, we say Acha for dad. हाँ, अच्छा, अच्छा. No, but then interesting, interesting. I was going to say like वो हम लोग वो मैं वो दिन गौरव को भी वही बोल रही थी कि हम लोग कोरियन शोज देखते हैं ना तो उसमें वो आबूजी और वो सब आता है ना. तो आई वाज हाँ, टेलिंग अपा. हिम कि हम लोग कैसे बाबूजी बोलते हैं तो वो लोग हाँ, आबूजी अम्मा अम्मा तो एकदम ही सेम हो जाता है ना. हाँ, ओम्मा अम्मा. बोलते हैं हम लोग अम्मा बोलते हैं. हाँ हाँ, तो मैं वैसा तो so I was मेरी telling मम्मी him. को अम्मा ही बोलती हूँ. अच्छा. हाँ, आप तो अम्मा ही बोलते रहोगे. हाँ. तो वैसा हम लोग का कितना सिमिलर हो जाता है ना सर रिलेशनशिप के वर्ड्स वाज व्हाट आई वाज Yeah, टेलिंग Korean. गौरव दैट डे ओनली. Lot of Korean words are quite similar to Tamil या. words. या. मतलब वो तमिल का काफी माना भी जाता है इन्फ्लुएंस ना है. कि उनकी एक प्रिंसेस या जो अपने यहाँ से या उनका शादी हुआ था. हाँ, राइट. सो वन ऑफ द प्रिंसेस इंडियन प्रिंसेस वाज मैरिड देयर. सो दे आल्सो हैव सिमिलर कस्टम्स के घर में चप्पल पहन के नहीं घूमते हैं एंड ऑल दैट. यस सो दे यस. आर वेरी सिमिलर इन दैट वेज कि ऐसा अपना भी जैसे काफी पेट्रियार्की वी हैव a lot of patriarchy system in our culture. So similarly there also is very patriarchy kind of a culture. फिर हम लोग ऐसे पैर छूते हैं वो लोग झुकते हैं तो बड़े हम्म. लोगों के सामने वैसा काफी हमारा उनका सिमिलर हो जाता है इन या टर्म्स ऑफ कल्चर इंडियन मुझे लगता है. इंडियन कल्चर के साथ काफी सिमिलर वो है या. उनका. एंड So Shalu has a question. These potlies are looking amazing. Khyati ma'am, can we wash them? अभी दिस इज क्वाइट मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मुझे लगता है कि कैन यू वॉश और नॉट वॉश. मुझे लगता है कि अगर आप उसको ढंग से ग्लू करो कि यू एड 2-3 लेयर्स ऑफ ग्लू उसके बाद उसको आप हाथ से लाइटली वॉश कर सकते हो क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट है जो अपना रिवर्स डेकोपाज करते हैं हम राइट. ये हमने सवाल बहुत बार रिवर्स डेकोपाज में लिया है कि हम उसको पीछे से वार्निश कर देते हैं और उसके बाद आप उसको अनामिका ऑलवेज सेज आप गीले कपड़े से पोंछो
या फिर आप हल्का सा पानी से उसको धो दो। बट आप उसको वॉशिंग मशीन में या डिश वॉशर में, मतलब चीजों को अगर आप डिश वॉशर में डालोगे तो इट विल नॉट बी डिश वॉशर फ्रेंडली। You have to then get dishwasher friendly glues. Like I know Mod Podge has a dishwasher friendly glue. So अगर बहुत लोग यूएस में जो खाने की आइटम प्लेट्स पे रिवर्स डिकोपाज करते हैं, वो लोग वही Mod Podge यूज करते हैं विच इज डिशवॉशर फ्रेंडली, क्योंकि दैट दे गारंटी कि आप उसको डिशवॉशर में डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई पर्सनली, आवर ग्लू इज वेरी स्ट्रांग, आई नो दैट, बट मैंने कभी इसको मशीन में डाल के नहीं देखा है। Probably what I'll do is I will give one try. मतलब मैं कर सकती हूँ ये try and I'll let you know कि इसको मैं मेरे कपड़ों के साथ मशीन में डाल के I will get back to you. So ये I will try and I'll let you know. मैं होती तो मैं हैंड वॉश ही करती, बट सिंस दिस क्वेश्चन हैज कम, मैं इसको डिशवॉशर में, अरे सॉरी, मशीन में डाल के आपको बता दूंगी, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या होता है इसका। ठीक है, मैं ले जाऊंगी इसको अपने बैग में। तो नेक्स्ट टाइम शालू रिमाइंड मी, आस्क दिस क्वेश्चन अगेन, आई विल गेट बैक टू यू विथ कि क्या होता है मेरे वो पोटली का। थैंक So यू I've Suprita. So Suprita says the best part of CraftAngle is that you have taken art journaling supplies to another level, and I'm so proud to say these products are made in India. Thank you, Suprita. And sorry to cut you, Paro. नहीं, So I was just thank you. telling कि I've you know added chalk pins over these, so my Okay, sentiments are also ready. And okay. in the meanwhile, while these things are still drying, हल्का Hmm. हल्का सा अपन chalk pins डाल के थोड़ा सा blending कर लेते हैं, ताकि Okay. by the time it is done and we place our sentiments and all, it'll be completely dry and we'll have the project ready. Right. So I'll be using complementing shades, जो Hmm. कि हमारे project में already है, right? These, and maybe a tinge of this. Can Maybe you just I'll be, name the color names of the yeah. chocolate, because I know that will come later on. This is ivory lace, this is lemon drop, and this is cool jade. ठीक है? Okay. And maybe I'll do some splatters with this. I don't want to, Okay. overpower, because this is quite a dark shade. Right. So I'll maybe go in with the pastels. I love these pastel shades. मतलब क्राफ्ट एंगल्स के जितने भी chalk pens है, this time I bought, I think 8 9 colors Ah. all together, and I And she love bought, them all. guys, so it was not like I have not sent her paints, because traditionally she gets a lot of mixed media supplies. So these chalk paints she has actually bought, so she can be honest about her feedback also. हाँ, तो कि अगर I आपको bought ऐसा them, डाउट and आए तो, anyways all our DPs are honest, but still I want her to be honest. so I am taking some. So this is just a craft angles का ही अपना transfer का cover है. हाँ, So I use the हाँ, मैं covers भी like वैसे ही this. यूज करती हूँ। हाँ, मैं भी वैसे ही करती हूँ, ट्रांसफर की बैकिंग वाला शीट्स को एज अ वाइट पैलेट की तरह ये प्लास्टिक को रीयूज कर लेती हूँ। मेरा Right. भी इधर ही पड़ा है, मैंने आज ही साइड में किया उसको। दिस इज हाउ आई आल्सो यूज माय प्लास्टिक पैकेजिंग। So I'm just adding the colors the राइट। that I showed. हम्म। हल्का हल्का सा, थोड़ा हाँ, थोड़ा ही चाहिए, क्योंकि the हाँ, हाँ। canvas that we are doing is not a big या। this thing. So I'm राइट। just adding थोड़ा थोड़ा सा. हम्म। Sneha is telling me too. सबका यही हाल है. क्या? वो बैकिंग का बोल रही होगी. हाँ, हाँ, वो, हाँ, हाँ। मैं देख रही हूँ, मैं एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स बीच में भी मिस हो गए, तो मैं अभी लाइन से जा रही हूँ वापस। हैव बीन यूजिंग योर नैपकिन सिंस लॉन्ग, थैंक यू कलर एंड स्ट्रोक्स। What you have been using are the Chinese or the German napkins that we sell.
but I'm proud to announce that the new ones that we launched under our brand, which is CrafTangles, these are all made in India. So ये अब हम जो live करने वाले हैं थोड़े time are with our own brand, CrafTangles Made in India napkins. So I do hope you give them a try, and I do hope you like them also. Fingers crossed. And thank you, Pranita. Keep loving our brand. Thank you so much. I'm going in with the first shade. Uh, So this is ivory lace that I'm doing. So just border okay. border हल्का सा किया है. Okay. I'll use the same color first क्योंकि ये काफी light shade है. So Right. before mixing it with other things, so I'll just try Okay. doing this first. Now I have a question for you क्योंकि ये एक्चुअली डिकोपाज की लाइव में हमारे बहुत पूछे जाते हैं तो आई जस्ट वांट टू नो कि अलग अलग लोगों के क्या क्या पर्सपेक्टिव है लाइक मैं हर बार अनामिका को पूछती हूँ कि व्हाट गोज इन योर माइंड व्हेन यू आर ब्लेंडिंग योर कलर्स आप एक तो ऑफ कोर्स इमेज के सिलेक्टेड कलर्स उठाते हो मतलब अगर आपने बहुत एज यू सेड यू सिलेक्टेड द पेस्टल शेड्स व्हिच आर वेरी सिमिलर टू द colors that are already there as a part of this palette, Hmm. right? So that works. So that is one logic. What is the second logic? Like, how do you decide which color to mix where and where to apply? Intuitively I do it, honestly telling. Okay. And I have this in mind पहले से ही कि मतलब I wanted to be light and joyful. So that is हाँ, another mood पहले ही थोड़ा मैं decide कर लेती हूँ कि correct. मुझे मेरा जो project बन रहा है उसका कैसे mood होगा. Hmm. Like when I look at it, how do I want it to be, right? Yeah. So I Hmm. do quite a lot of moody dark projects also. So Right. वो पहले से ही वो decide होता है कि मुझे कैसे चाहिए वो particular Hmm. project, and Hmm. accordingly I choose my colors, Okay. and it should definitely complement with the elements that I'm using in the project. So Okay. definitely that's a parameter that I consider. So यहाँ पे if you see it is nice and vibrant, right? All Hmm. my elements. So Hmm. both the flamingo Hmm. and the flower. So I don't want to put in too much of colors अलग से. I want the focus to be on these only, and Right. rest of them it'll just help me to combine everything together. It won't Right. be like too much loud. Background मेरा main focus नहीं है. My main focus is the napkins here, so I'll let it be the focus, and rest everything I'm just going around. वो एक थोड़ा सा you know it'll just combine everything together Right. into So a these single piece. are like supporting elements, colors को आप use कर रहे हो just to bring everything together. Rest it. Correct, correct. So Okay. now I'm going in with the second shade. This is cool Cool jade. shade. Yeah. Good to know. So even Pranita is saying that I love I find decoupage very meditative, and as Parvati says, it is all based on the mood. And Kavita is saying flow will be continuous. I love this color. Absolutely. अभी actually वो blue शायद मैं cool jade use नहीं करती. Personally अगर आप मुझे पूछते ना ये वाले napkin के साथ. But अभी ये जब लगा है, it is actually looking even better than the ivory lace जो आपने पहले डाला था. Ivory lace क्या कर रहा था? सब सेम शेड हो रहा था ये कॉन्ट्रास्ट में बहुत सुंदर ब्लू डल रहा है उसके साथ Hmm. सो इंटरेस्टिंग Again, एंड I'm गाइस just फॉर दोज ऑफ यू हु आर जॉइनिंग आवर लाइव कुछ कुछ इसमें से शेड्स आर आउट ऑफ स्टॉक आई लेट यू नो बिफोर हैंड बिकॉज आई नो आई गेट दिस फ्लैट chalk pens will start being back in stock from mostly next week or next to next week. We are sold out on I think 10 plus colors out of 40 colors that we sell. As I said, हम लोग सब रिलीज में बिजी थे तो हम लोग ऑनेस्टली आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स बहुत ध्यान नहीं दे पाए तो हम लोग अभी धीरे धीरे दे आर कमिंग बैक इन स्टॉक जैसे आजकल में हमारे लिक्विड एक्रिलिक्स बैक इन स्टॉक आएंगे
कि a lot of people were asking you कि I had shown a lot of tutorials with liquid acrylics in my last lives. Parvati and Sneha had been using them in their mixed media. So liquid acrylics are going to come in another 2-3 days में पूरी range back in stock आ जाएगी, and chalk paints will take 2 weeks and they will be back in stock. Just for those of you who have been asking, I'm just letting you know, being transparent. So wherever I felt Interesting. कि Yeah. मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, I Hmm. तुरंत मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उसको Okay. blend out कर दिया, like here Right. over here I thought it was pretty rough. So chalk pins, if Right. you work on it when it's still wet, you can blend it out. Hmm. Pranita says everything is gifted and displayed around the house. Oh my God, you must be having a big house then. Thank you, Pranita. So Pranita is saying this is looking beautiful. Kavita says looking pretty. Neeta says looking beautiful. And Pranita says, Parvati, तुम्हारा project देख के who will say you are a beginner? मतलब आर्ट तो करते हैं बट ये वाला काम नहीं करते, सो या हाँ, मतलब कलर की ट्राइंग आवर समझ तो बेस्ट. है हाँ. क्योंकि बचपन से कलर से खेलते आए हुए हैं, होली हो या ना हो. बट हाँ, डेकोपर नैपकिन कम यूज करते हैं, जो अब हम ज्यादा यूज करेंगे. और इफ यू रिमेम्बर गाइज, आई मीन आई वाज सपोज टू से दिस इन लाइव आल्सो बट आई फॉरगॉट कि हमने आपको हमारी जनवरी की लाइव में प्रॉमिस किया था कि हमको लास्ट ईयर से लोग बोल रहे हैं कि आप है ना बहुत कम डेकोपाज ट्यूटोरियल्स डालते हो. आप ट्रांसफर्स भी ज्यादा आर्ट जर्नल में दिखाते हो, ज्यादा लॉट ऑफ मिक्स्ड मीडिया वी डू. सो I think Anamika was the only one who used to do a lot of decoupage dedicatedly. So if you remember, हमने जैन में बोला था कि ये साल हमारा एक we are going to put a conscious effort to do a lot of decoupage this year. And that is what we started because at that point of time already we were working on this product. I did not want to, of course, say that at that point of time. But मुझे ये था कि हम napkins लाएंगे ये साल. And this year is going to be a lot of decoupage under our brand. Of course, transfer, journaling, सब कुछ चलता रहेगा. But you will see a lot of decoupage inspiration, decoupage projects also from our brand. So, I hope all those decoupage lovers are excited for that. इंडीड कविता, फ्लेमिंगो फ्लावर सब मैच हो रहा है. मतलब आपको मैं बोल रही हूँ ना, 50 डिजाइन जो हमने लॉन्च किया है, यू विल गेट अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स विथ दिस, सो इट विल रियली वर्क आउट. Now I thought I'll add some yellow also, but directly yellow apply करने पे I'm not liking it. So what ओके. I'll do is I'll take some yellow and I'll add some splatters. ओके, इंटरेस्टिंग. मुझे So this स्प्लैटर्स way, बड़ा पसंद है. समहाउ मुझे लगता है बहुत लोग ऐसा फ्लैट मिलता है हमें स्प्लैटर्स के लिए, बट आई थिंक स्प्लैटर्स ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. मतलब और छोटी yes, मोटी मिस्टेक्स है ना छुप जाती है, मुझे लगता है. yes, absolutely. So I'm adding some yellow splatters and I want the dark pink splatters also that I told. French rose भी मैं थोड़ा splatters में add करूँगी. So that will combine everything together and it'll look mast एकदम. ओह वाओ, You थैंक यू. can see. प्रणीता ने आज हमें एक बहुत अच्छा कमेंट दिया है कि अग्रीड विद सुप्रीता, हैड टू ऑलवेज गो माइकल एंड डॉलर स्टोर एंड स्टॉक अप स्टफ बट हैंडमेड हैज चेंज दैट फॉर मी. सो थैंक यू प्रणीता, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. This is एंड awesome. मतलब ख्याति तो आज एकदम क्लाउड 9 वाला फील कर रही होगी. मतलब सी, हम लोग को हमेशा लगता है कि हम प्रोडक्ट निकालते हैं जो लोगों को चाहिए. सी इट सेल्स, इट्स देयर इज लाइक आई मीन ऑफ कोर्स आई एम मेकिंग इट, बिक रहा है इसीलिए मैं बना रही हूँ. मतलब वरना मुझे सिर्फ अपने लिए तो इतने नहीं बनाऊंगी मैं प्रोडक्ट्स. बट इट इज ऑलवेज गुड टू हियर फीडबैक फ्रॉम Obviously. पीपल वेयर दे आर एंजॉयिंग द प्रोडक्ट्स. एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी कॉल्ड आउट कि नहीं यार, आपने हमारी ये इशू सॉल्व कर दी, जो इंडिया लेवल पे है. तो दैट
ऑलवेज ड्राइव्स मी मोर कि मैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाऊं, तो ये मुझे बड़ा मतलब आई मीन these kind of comments do make my day, so thank you so much. So if you see, वो Yeah. splatters आते ही एकदम everything is coming together. I हाँ, am करेक्ट. loving this. और आपने ये स्प्लैटर्स में पिंक यूज किया ना, फ्रेंच रोज, वो ब्राइट Yes, पिंक कलर. ओके. yes. ओके. French rose and the yellow also lemon drop. लेमन टार्ट. Yeah, लेमन ड्रॉप. ओके. लेमन टार्ट lemon. इज वाटर कलर. Yeah, so lemon drop also I've added as splatters. So ये दोनों हम्म. में yeah. सो सुप्रीता सिंह कहती प्लीज कम अप विद A6 A7 आर्ट जर्नल. आर्ट जर्नल आएंगे, ये साल ही आएंगे. बस काम चल रहा है आर्ट जर्नल पे. इट्स जस्ट दैट हम लोग थोड़ा मतलब वी आर फाइन ट्यूनिंग द थिंग्स, वी आर डिसाइडिंग ऑन हाउ टू ब्रिंग कॉस्ट डाउन. आपको पता है मेरे को प्राइस बहुत महंगा करना पसंद नहीं है चीजों का. सो वी आर ट्राइंग टू सी कि हम कैसे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस पे कैसे कर सके. As Pranita said, also more affordable than most other brands. So that is the title we want to keep. And इसीलिए हम लोग को शायद R&D में भी थोड़ा टाइम निकल जाता है, क्योंकि हम लोग काफी वी हैव दैट इंडियन मेंटालिटी कि और सस्ता हम इसको कैसे कर सकते हैं. And एंड वी डोंट वांट it टू is लीव not आवर just रूट्स दैट sasta, इज. guys. Just star mug. या. Uh, yeah, it is अभी not मुझे just वरना sasta. पार्वती It डांटती थी, आप ऐसे क्यों सस्ता बोल रहे हो, आप क्वालिटी क्यों भूल जाते हो. यस पार्वती बोलो आप, सॉरी आप Malab डांट लो मुझे. quality is also maintained. या. I have used CraftAngles from a long time and I have seen the products evolve. And literally I've seen the products evolve. So there's a lot of R&D that goes on behind the scenes, guys. तो पहले के पेस में और आज के पेस में राइट. there is जमीन आसमान का फर्क. So Khyati and team, they actually sit and work on all these small details which actually contributes to the product quality and everything. They listen to us. That's मतलब मैं ऐसे बोलने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही. I've worked with multiple Indian brands and international brands. I still work with international brands. So I have that experience of working with multiple teams. And I can vouch कि मतलब I've been valued here the most. And when they listen to you, right? And they make you feel कि हाँ, you are important to us as much as any other person, any customer review. So वो एक बहुत बड़ा चीज है, I feel. So that is something I absolutely love here in CraftAngles. And ये बस बोलने के लिए नहीं बोल रही, I am telling it from my heart. So I really या. appreciate Khyati and team for that. And I am थैंक यू. थैंक sure यू. Sneha also feels the same way. I am sure other DTs also feel the same way. या. थैंक यू. क्योंकि मुझे याद है कि हमने मतलब जब भी हमारा फॉर्मुलेशन थोड़ा चेंज होता था पेस्ट और जेसो का, बिकॉज लास्ट ईयर आई हैड सेड दिस इन लाइव आल्सो कि a lot of our 1 or 2 years went in perfecting gesso and paste for so that वो ड्राई ना हो जल्दी, वो ज्यादा आपको शेल्फ लाइफ मिले, वो वाइट कितना और वाइट कर सकते हैं, कितना गाढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव अ कंप्लीट रेंज ऑफ पेस्ट. So as I have always said, we don't believe in कि हम लोग बस उसको स्टॉक लेके उसको व्हाइट लेबलिंग कर दे या फिर इंपोर्ट कर ले. वैसा हमारा मेंटालिटी नहीं है. हम मेड इन इंडिया बोलते हैं तो हम मेड इन इंडिया ही बनवाते हैं. और उसमें सी इंडिया इज अ वेरी लाइक इट्स अ लर्निंग मार्केट व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड क्राफ्ट. इट्स नॉट अ डेवलप्ड मार्केट लाइक US और यूरोप. आई सी दिस टाइम एंड टाइम अगेन. So a lot of time when you are making products, even when we talk to vendors, and all that, so they don't understand it in the terms that we understand. So there is a lot of back and forth that goes. We bring 10 brands that we sell this quality we like के हमें ये quality करना है, तो अब हम कहाँ अटक रहे हैं. So as I said, हम लोग बहुत सैम्पल मतलब literally बहुत evolve होते हैं with every batches of things that are being made.
सो आई रिमेम्बर मेरे को एक दो बार पार्वती ने भी बोला था यार ये मेरा ना जेसो ड्राई हो रहा है, मतलब थोड़ा और इसको लंबा ड्राई करने से हटाते हैं। मुझे याद है मुझे व्हाइट जेसो में एक बार फीडबैक मिला था। आई डोंट रिमेम्बर द पर्सन, आई थिंक शी वाज वन ऑफ आवर एक्स डीटीज। शी हैड टोल्ड कि मेरे को व्हाइट जेसो और ओपेक चाहिए, लाइक इट्स गुड क्वालिटी बट मेरे को ओपेसिटी चाहिए। तो हम लोग में काफी कुछ चीजें हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव वर्कड, एंड अगेन दीज ऑल आर थिंग्स दैट गो बैक एंड वी नेवर यूज्ड टू स्पीक अबाउट इट. But I have realized that when you speak about it, people understand the time and effort you have put as a made in India brand and all these things. And then they appreciate you for it. And, as we always say, we try to be as transparent as, with our customers. So I hope you do consider that effort when, you are supporting a made in India brand. को कई बार and I tell this to Kathy also that you don't talk enough about how much efforts Yeah, that you put in behind the scenes, and कभी कभी वो ना बोलने पे लोगों को पता भी नहीं पड़ता. And right. I feel that she and her team, they put in a lot of effort in ensuring that the product quality is not compromised, and the pricing is as perfect as possible for the Indian market. And if there's anything, if you have any complaints, हम complaints भी बोलते हैं ख्याति Yeah, को, मतलब कुछ अगर हमें समझ नहीं आता है तो we are very transparent that ways also, all the DTs. So we tell her कि ख्याति, we feel that this is not working, so maybe we can do something better in this. And she yeah, takes in that, जो भी हमारा feedback है, she takes in that very positively in a constructive manner, and she tries to work. मतलब ऐसे नहीं है कि तुरंत next day it will be done. Obviously that is not how it works, but she does keep things in mind and she works on it, and we do see results, so that is something that we all appreciate. thank you. So I'm done with all the splatters. I did some more edging using the darker shade blue velvet. Yeah. तो उससे थोड़ा Hmm. सा और defined look आ गया है ना. And I have kept the flamingos in such a way that the first one is इस side में, second is ऐसे here, ऐसे. and the third one Okay. is here. हाँ, तो Right. थोड़ा वो diagonal वाला alignment. Right. थैंक यू Just प्रणीता. इंडीड प्रणीता ने इसीलिए बोला कि मैंने इसीलिए आपको टर्कोइज बोला था कि मतलब वो भी है ना, एक्सपीरियंस की भी बात होती है कि टर्कोइज अच्छा सेट हो जाएगा. मतलब एज आई सेड मैं इतना नहीं सोचती शायद. सो शी सेड इट राइट के good to know what people think when they are doing so many decoupage projects. I too am not so comfortable with napkins and was happy with working with transfers. But looking at Paro working, I too want to try. Yes, Nadia, go for it. हम सबको अभी डेकोपाज आर्टिस्ट बनाएंगे ये साल. सबने जिन्होंने ट्रांसफर्स यूज किए हैं, जिन्होंने जर्नलिंग में हम सब सिखाया, अभी हम सब वापस हम नैपकिंस में भी करेंगे. बिकॉज I honestly, I have said it this in live also. This doesn't mean that we are stopping transfers. I saw one of the comment जिसमें कविता ने बोला कि हमारे पास ऑलमोस्ट 550 ट्रांसफर्स है. एंड आई थिंक प्रणीता सेड दैट मुझे और चाहिए. तो सब ट्रांसफर्स आर गोइंग टू कम. ऑलरेडी हमारी अगले सेट की डिजाइन रेडी हो गई है अगले रिलीज के लिए. दे गोइंग टू गो अंडर प्रोडक्शन. I remember saying this in live also. So one thing is that with napkins coming in, transfers are not going out. बट एज अ डेकोपाज आर्टिस्ट एंड एज अ ब्रांड मेरा काम है कि मुझे आपको सारे ऑप्शंस देने हैं. तो आपको डेकोपाज पेपर यूज करना है, आप वो यूज कीजिए. हम वो भी बंद नहीं कर रहे, A4 में चलता रहेगा. आपको डेको थिन चाहिए हमारे, वो यूज कीजिए. आपको हमारे प्लेन राइस पेपर्स आते हैं, उस पर स्टैंपिंग करके खुद कलर करके करना है, आप वो कर सकते हैं. दैट ऑल्सो विल कंटिन्यू. एंड सेम गोज विथ अवर napkins. We are still going to sell napkins, right, on our website because people like it. But again, we are giving you an Indian alternative to those napkins. So if you want to use made in India napkins, you like our, as I've talked about, quality print in my live. So you can go that and check it out, the release live, where I've compared the quality and all that. So everything is going to continue. Even transfers are going to continue. As an artist, as a brand, we want to give you options so that artists can pick and choose. And that
is still going to continue even this year, next year, next to next year. Okay. So do give it a try, Nadia. I hope you enjoy our newly launched product. Please increase transfer variety. As I said, Pranita, हमारे अभी हम लोग के पास 525, 530 transfers हो गई है, which I think is one of the biggest in India. But still, as I said, हम लोग continue करते रहेंगे. So पहले कैसे हम करते थे कि हम 50 ट्रांसफर एक बार में निकालते थे. अभी हमारा क्या हो गया कि हम बाकी चीजें जैसे नैपकिन है उसमें भी निकाल रहे हैं. तो शायद हम 20 ट्रांसफर निकालें. बट ट्रांसफर कंटिन्यू रहेगा, वो बंद नहीं होगा. ठीक है. तो ट्रांसफर्स विल, आई मीन द रेंज विल गो ऑन ग्रोइंग. So I am done, guys. हो गया. ओ माय गॉड. I'll just keep them. इसमें बस मेरे को अभी वो करना है कि I'll do some sanding बट on इट the इज edges. लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. हाँ, मैंने हाँ, thank बोला you. नहीं है, बाकी लोगों ने तो बहुत बोल दिया. मैं क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स कर रही थी. Thank you. आई लव द Thank you. platters. It has brought everything together हाँ, really well. वो एकदम मस्त हो गया है वो स्प्लैटर्स से ना. हाँ. आई एम सिंपली लविंग इट. इसमें बस अब मेरे को वो स्ट्रिंग्स डालने हैं. So I'll add the strings and then maybe post a pic or give a video or something like that. Yeah. देखती हूँ मैं what works best, but चलेगा. yeah, I'll just show you. हाँ, मतलब मैं बोल रही थी कि थोड़ा जूम इन करके दिखा रहे थे हमारे जैसे लोगों के लिए. So the pink shade is French rose, Pranita, which she had used, the bright pink one. ब्यूटीफुल. मुझे वो येलो का भी बहुत सही लगा जो आपने ऐसा पॉप ऑफ कलर डाला ना नीचे वाले में, येलो अलोंग विद हाँ ब्लू हाँ नीचे. वो अच्छा लगा हाँ. मेरे को. मस्त आ रहा है क्योंकि वो पॉप ऑफ कलर. यहाँ पे थोड़ा सा वो येलो है ना, तो उसके साथ फ्लावर्स है ऑर्गेनिकली इट इज ग्रोइंग. और वो राइट. वाटर कलर लुक हो हाँ, गया तो बहुत सही लगा. उनको मैंने तुरंत वो कर दिया था क्योंकि हाँ, ऐसे इट वाज पानी से लुकिंग ऐसे ऐसे करके उठाई राइट. है. So वो it looks very या organic that way. मैं वो बहुत करती हूँ इसीलिए मुझे पता है. लेकिन मैं नॉर्मली मतलब मुझे वो येलो बहुत सुंदर लगा जो मिक्स हुआ है वैसे. Yeah, and the लवली. splatters also. या मतलब आपको Kavita is saying the same thing. The splatters look really lovely. हाँ, तो वो येलो वाला splatters and here if you see Pink and the blue as splatter, well. yeah, pink, Yeah, blue and yellow. It is looking stunning. yeah. मतलब कैमरा Beautiful, won't be beautiful. doing और much एकदम of हैप्पी anything. हैप्पी वाला फीलिंग आ रहा है. बॉटम लाइन जो आपको हाँ, चाहिए था कि हैप्पी लगे, इट इज लुकिंग हैप्पी. yeah. So the idea is that कि इसको देख के थोड़ा एकदम वैसे सनशाइन हैप्पी फीलिंग हो. नेहा बोल रही स्प्लैटर्स तो सबका फेवरेट है. एक्चुअली हम लोग वो मिक्स मीडिया और विंटेज वाले बिना स्प्लैटर्स की जिंदा ही नहीं. मतलब मेरे को तो लगता है मुझे चैलेंज हो जाएगा कोई मेरे को बोलेगा कि आज प्रोजेक्ट में स्प्लैटर मत डालो. ये देखो मेरे सब पे है, इस पे भी मैं स्प्लैटर मैं है, सब पे मैं I स्प्लैटर am डालती हूँ. not someone who puts splatters in all my projects, but ओके. कहीं पे भी मेरे को लगता है कि हाँ splatters can combine things. I use them. Like this is या. one such projects where I loved using splatters. इसमें वो एकदम राइट. with the colors. सब ऐसा Yeah. कंबाइन हो गया. हाँ, राइट. एकदम वो पूरा कंबाइन होके आया था. So I love splatters एब्सोल्युटली. here, and I love splatters here. या. And I'll quickly show you my other. या. स्नेहा is saying मस्त होम डेकोर वाला बन गया विद एकदम हैप्पी वाइब्स. एंड दिस वाज हाँ, वेरी क्विक. आई थिंक हम लोग ने 4:15 के बाद तो चालू किया. सैंपल्स बताए विद इन 1 hour ऑलमोस्ट 1 हो hour. गया. Yeah, तो व्हाट 1 वाज hour वेरी this was क्विक. done. Yeah, and एंड टू I एंड. have not stuck this. ये मैं बाद में चिपकाऊंगी because I want this to dry properly and I'll apply 1 or 2 coats of varnish. So I'll be using CrafTangles का decoupage varnish on top of this. And once I have, I'm done with 2 coats of varnish, then I'll, stick these. Because if I stick these now and then apply varnish ना, वो हल्का सा इधर उधर हाँ, वो वो एडिशनल वो हाँ लेयर परत जैसा आ जाता है राइट कोनों में. राइट एंड आई हेट दैट. सो या.
So I ensure that I don't add any 3D elements Yeah, before I do my varnish. This is one of the reasons I feel my nameplates also takes quite a long time, क्योंकि एक एक yeah. लेयर मैं एकदम सुखाती हूँ फिर हाँ, वो करती हूँ, correct, and correct. only the last में वो सारे elements come together. चिपकते So हैं. हाँ, so Very I beautiful, but I'm loved it. loving the flamingos and I mean I'm loving it. मतलब मुझे loving हो रहा है तो I'm sure आपको तो बहुत ही हो रहा होगा considering keeping it at your home and this is actually looking very happy like it is giving that happy vibes, you know. Right. So वो टॉप I वाला फ्लेमिंगो तो यार इट इज हैविंग माय हार्ट जो फर्स्ट वन है ना बहुत मेरा एक्चुअली सेकंड वन फेवरेट था बट इसमें मेरा फर्स्ट वन बहुत सही लग रहा है हाँ, जो फर्स्ट फ्लेमिंगो है and it looks all together है ना. This is हाँ actually a different करेक्ट napkin, क्लीन but लग रहा है उसको या हमने एकदम naturally उसको combine कर लिया, so it looks as though वो पूरा एक करेक्ट complete scene create हुआ है. एब्सोल्युटली करेक्ट Yes, So guys, this is a good point that Sneha pointed out. हमारा varnish and I tell this time and time again कि आपको कभी urgently करना हो तो कीजिए, but don't use heat gun to dry or varnish. Because मैंने देखा है कभी कभी आप बहुत ज्यादा हीट कर दो ना जैसे मैंने ये किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स में गलतियां तो वो येलो हो जाता है ओके सो उसको नेचुरली ही ड्राई होने दे वो नेचुरली अपना पूरा लेवल आउट होके मस्त इट विल ड्राई क्लियर एंड ऑल दैट so with varnish, have patience. Don't use a heating tool for those of you who are new. And thank you, Mona Divan. So Mona Divan is saying this is a beautiful project, Paro. Thank you, thank you, Mona. Mona. And thank you, Colors and Strokes. She said the colors are very vibrant. Thank you. So, for people who didn't join us initially, these are some samples that we had created before the release. So, this is actually a book cover. Yeah, the varnish will take you 20-30 minutes to dry, but I tell people take 1 hour, तो एकदम hard हो जाएगा उसके बाद आप अगला layer डालें. Right. So sorry, please go ahead, Paro. So this was a book cover that I did. So just to show, I kept the back Yeah. जैसे natural था वैसे ही रख दिया. So it was like this, and that we converted to this using napkins. यहाँ पे भी हमने दो napkins use किए, and using Hmm. some watercolors, I've blended it out. ये वाला, Hmm. and I added some cornices. तो थोड़ा सा वो Right. एडिशनल वो के लिए. हाँ वो दिस अच्छा इज लगता है अ कॉर्नर्स हाँ, this is a coaster that I made here. This is liquid glaze. So this हम्म is like resin जैसे coat आ जाता है, टॉप and कोट there's no mixing and other things. So, and I've added some, glitters and also this is very pretty. इसका फोटो ढंग से नहीं आया है. हाँ So I wanted to show थोड़ा फोटो डिड नॉट this. डू इट जस्टिस ये एक्चुअली एक्चुअली हाँ, ग्लॉसी वाले का वही प्रॉब्लम है रील में ऐसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं right. rather And than here photos also it is not looking as pretty. ये जो real life में दिखता है ना, my husband loved this हाँ instantly. He was like, ये तो बहुत हाँ सुंदर लगे. So this is actually a नहीं very लिक्विड pretty piece. ग्लेज हमारा स्टार प्रोडक्ट एक्चुअली हमारा लिक्विड ग्लेज ऑलमोस्ट महीने में 2 बार आउट ऑफ स्टॉक होता है It इतना is मतलब वो very लिटरली easy. हमको लोगों का कमेंट आता है Yeah, वेरी इजी टू यूज yeah, very easy to use. थोड़ा सा आप apply करो and no mixing, no matching, nothing. Just leave it there and it'll harden as so you can hear. या रेसिन जैसे ही फिनिश है, एंड इट इज रफ एंड टफ या यूज. ये एक ये प्योर मिक्स हमारा मीडिया. ब्लेंडिंग वाला हाँ, see this entire piece, everything is chalk pen से blended. It is not part of या the napkin. वेरी So I was ब्यूटीफुल very proud of that blending. या And this is my husband's favorite piece. He look आई at this ऑल्सो every day लव and he says कि ये तो बहुत बहुत फाड़ है, बहुत बहुत he सुंदर says. और जिस हिसाब से वो अलग अलग कलर के एलिमेंट्स भी आपने मिक्स किया है ना मतलब इट इज नॉट इजी क्योंकि मैं मिक्स मीडिया करती हूँ ना तो मुझे रियलाइज होता है कि वो इतने कलर्स को आप इंट्रोड्यूस करके उसको कोहेसिव रखना इज वेरी डिफिकल्ट और वो लेफ्ट तो मैं जेन्युइनली बोलूं मुझे 2 मिनट के लिए लगा नैपकिन का ही वो बाल है
फिर Yeah, तुमने बोला if ना you look कि ये मैंने closely, ब्लेंड किया you'll है, तब आई I रियलाइज। have to varnish this. तो अभी के लिए you can actually see वो हाँ, chalk paint है तो वो मैट matte और effect ग्लॉस। आपको हाँ, दिख रहा है. तो once I varnish, everything will look और मैंने एकदम. लिटरली डबल टेक किया। आपने बोला ना कि यार मेरी ब्लेंडिंग पे कमेंट नहीं आया, जैसे ही फोटो हमने ग्रुप में शेयर किया था अपने व्हाट्सएप पे, मैंने बोला यार ये ब्लेंडिंग है, फिर मैंने जूम इन करके देखा और तभी मैंने तुम्हें बोला यार अमेजिंग ब्लेंडिंग है। मतलब मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि ब्लेंडिंग था। वेरी मतलब आई एम श्योर डिड इट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, लाइक आई वाज वेरी क्यूरियस। No, no, no. ये वाला काफी easily हो गया था. Effort वाला अच्छा, I am showing next. ओके। This is a tray that हाँ, I did. but do इसमें you know a मेरी lot of European crafters who have done such trade? Trust me, वो at that par ये quality लग रहा है। मतलब it ये is. मैंने फोटो देख के ही बोला था ये बहुत सुंदर हाँ, बना है। ये एक्चुअली में काफी सुंदर बना है एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ Yeah, दिस बिकॉज दिस इज yeah. मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट डिकूपाज वाला एंड Almost देयर 12 आर अ inches. लॉट. Yeah. हाँ, ये 12 इंचेस का है Hmm. एंड देयर लॉट ऑफ स्टैम्पिंग्स सो Yeah. देयर इज अ लॉट ऑफ Stencil work. वर्क हियर. Yeah. हाँ, ये स्टेंसलिंग है यूजिंग आवर गोल्ड टेक्सचर पेस्ट. यहाँ पे भी टेक्सचर. There's so many layers of chalk pens here Yeah, because blending the बहुत paper. किया है, दिख रहा है। हाँ, बहुत सुंदर। इसमें the paper is not completely covering the Yeah. entire thing. So I had to blend in colors to get them all together and I Yeah. love it. मतलब, and there was no single wrinkle in any of these projects and I was so proud कि मतलब एकदम इतना प्राउड फील हो रहा था ना हाँ, कि वाह मैंने हाँ, किया. नहीं बहुत So सुंदर, it बहुत is सुंदर। actually very easy to use, guys. आपने देखा कि this entire thing I made within a hour or so. बाकी तो हमारे बातों में Yeah. लग गए टाइम. बाकी हम्म। yeah. बातें, सैंपल दिखाने में, क्वेश्चन आंसर, वो भी मैं बोलने वाली थी कि हम लोग अब आपस में दो चार क्वेश्चन जो आए हैं लोगों के और वो आंसर कर देंगे आफ्टर यू शो द सैंपल्स। Right. और क्योंकि कुछ I'm कुछ रह गए बीच I'm done with the samples. में। So if वेरी ब्यूटिफुल। there's any I love questions, this, but Parvati, let me take a moment and tell you, very beautiful project. I loved it. The flamingos बहुत सुंदर खिल के आए। मतलब स्नेहा भी बहुत मस्त, जेन्युइनली बहुत मस्त लग रहा है। लाइक मेरे को लग रहा है मैंने तो बड़ा सिंपल प्रोजेक्ट बना दिया सैंपल में कोस्टर, बट आपने ये जो किया ना बहुत सुंदर लगा मुझे, वाइल्ड फ्लावर्स के साथ जो मिक्स किया है वो। thank you, thank you. इसमें बस मेरे को अभी थोड़ा फिनिशिंग करना है like these holes and all I'll put out and I'll हम्म। add the Put you know the string. वो. Yeah. हाँ, I'll put a string and then I'll be done. Yeah. So we'll wait for the reel for this Yeah. once you pick the project. And thank you so for I, Ranita is saying that the interaction is also great. But thank you. So we take pride in that we can try and do two people live so that it's fun for people and it can be communicative for everyone who is joining in. So आप questions भी पूछ सकते हो, आपके questions भी ना miss हो और वो दूसरा बंदा अकेले अकेले प्रोजेक्ट करते करते बोर भी ना हो जाए. So yes. So हम अभी आपका चेहरा देख सकते हैं पार्वती. And while that, I'll also take comments जो मेरे बीच में छूट गए थे. So Colors and Stroke is saying it is great to know we have international quality products now made in India. Thank you. That's like we want to be known as a brand who does that, and that has always been our focus since day one. And इसलिए guys, we are very open to feedback. As always, let us know. जहाँ पे होगा हम बोल देंगे, जहाँ नहीं होता वहाँ पे मैं मेरे लाइव में लोगों को बोल भी देती हूँ कि there are a lot of times where people come and tell me आप ये क्यों नहीं करते. ऐसे रबॉन्स का मुझे पता है. राइट. सिर्फ एवरी आप टाइम लोग ही लोग नहीं आ रहे हैं बोलते. रबॉन्स के लिए. शी टेल्स टू हाँ, अस आल्सो कि हाँ. मतलब मैं ना भी मी बोल स्नेहा देती हूँ जो हाँ, नहीं है वो नहीं है, जो उसमें नहीं है मैं वो झूठ क्यों नहीं बोलूं. है. शी इज वेरी ट्रांसपेरेंट दैट वे. सो या मी एंड स्नेहा तो वी गो विद द वाइल्डेस्ट आइडियाज. कभी कभी तो कभी कभी शी टेल्स कि ये नहीं हो पाएगा तो देन वी अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है. हाँ, मतलब till the time you are okay to take a rejection from me, like how I am also okay to take a feedback, तो फिर मतलब फिर अपना मस्त रहेगा रिलेशनशिप एज अ ब्रांड एंड कस्टमर. आप मतलब आप भी दिल पे ना लीजिए, मैं भी दिल पे नहीं लूंगी. सिंपल. सो थैंक यू. कविता इज सेइंग सस्ता नहीं सबसे अच्छा. थैंक यू कविता. Sneha said very well said, absolutely very well said. They are listening, guys. You give us genuine feedback. Thank you, thank you.
And thank you. So, Pranita said that Parvati, that is so nice to hear, being valued the most here. That means a lot to me as I look for honesty in brands and spend money there. That same reason I spend all my money with Tatas. Absolutely. I love Tatas. That's why I've been a huge Tata fan also. Personally, as a brand, I love Tatas. She's saying I like the मेरे way रूम how you are में rotating the sponge with two different blues in different parts when you were edging the stuff. आप rotate कर रहे थे ना वहां पे. She does that also. Edging से जान आ गई. हाँ हाँ उससे Oh, मतलब thank God you did diagonal वाला thing. मुझे कब से बोलना था. Diagonal वाला thing क्या किया? क्या चीज मतलब स्नेहा बोली हो thank God you did diagonal वाला thing. मुझे कब से बोलना था. स्नेहा बाद में व्हाट्सएप पे बताना क्या डायगोनल वाला थिंग था मुझे भी नहीं समझा कि वो डायगोनल वाला क्या किया. अच्छा मे बी वो सैम्पल्स में बोल रहे होंगे फिर. हाँ हो सकता है डायगोनल मैंने क्या किया था Flamingo to hit hai. Thank you. Yes, Flamingo is loved. Like our birds and flowers are, people are loving it. Project is looking beautiful, gorgeous. Thank you, Nadia. Thank you, Kavita. And I want to say this specifically because, Kavita just commented right now. Also, actually, I try not to miss their lives. Kavita, hats off. I mean, hats off to your dedication to attending all our lives end to end. I mean, I don't think I say this enough, but you have consistently been support, and it's for all DTs. She doesn't have a favorite. She comes in all the lives. So I mean, I appreciate that you are supporting all our designers. And ठीक giveaways, everything is secondary. But I really appreciate people who are here to learn and have fun he is because at the end of the day, we genuinely also here like that. for the Yeah, brand and for all of us वो एक exactly. genuinity अलग से So दिखता I है really appreciate वो yes दिखता है exactly and she is there. मतलब वो कभी नहीं आता है ना तो उनका मेरे को आया भी था एक आध बार डीएम कि sorry I could not attend, I was out of town. And I mean I feel कि यार yeah so sweet of her she to has do that. DM'd So me also once कि वो शायद yeah, गणपति के टाइम में था कि शी टोल कि थोड़ा सा हम बिजी रहते हैं तो आई मे नॉट बी एबल टू बट आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड आई फेल सो गुड कि मतलब शी genuinely tries to be there for yeah. you So thank you, Kavita. I mean that was a special shout out I had to give. So, and thank you, Pranita, for making. I mean, today you were commenting a lot. Thank you. We appreciate our customers who come in and, make it a lively chat and give us their genuine feedback, honest feedbacks. Thank you, Color and Strokes. You also, commented a lot. Thank you, Shalu. Shalu, मतलब एकदम मस्त मस्त मुझसे सवाल पूछिए. And this is I also want to see कि क्या होगा जब मैं इसको धोऊंगी तो मैं ये धोने में डाल दूंगी ये वीक. I want to see कि क्या होता है. Just मेरा अंदर का I agree साइंस with ग्रेजुएट Sneha. I जाग गया agree है. with Sneha. If Kavita is not around, actually we miss her. हाँ बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली उनके कमेंट्स आते हैं एंड इट्स मतलब एक थोड़ा होता है ना कि यार कोई कमेंट कर रहा है कोई देख रहा है अच्छा लगता है Yeah. तुम्हें भी. सो या थैंक यू. So yes, I think I'm done. Ordering liquid glaze today. Thank you, Pranita. Do that. I hope you will like it. And हाँ मैं आपके पापा जी का मिस कर गई. उन्होंने कहा नाइस क्रिएशन दिनेश त्रिपाठी. Thank So you. thank you, sir. Thank you, Sneha. And liquid glaze is applied with brush. So we have a lot of reels, colors and strokes. You can apply with brush, but as पार्वती ने जैसे वो लाइट हैंड से जैसे नैपकिन के साथ कर रहे थे ना वैसे लाइट हैंड से करना ताकि आपके ब्रश स्ट्रोक्स ना दिखे वंस इट इज ड्राई. और यू कैन ऑलवेज अप्लाई इट लाइक इरेजर. मतलब आप इस पे पोर कीजिए और उसको ऐसे ऐसे मतलब मैं तो एक्चुअली वुडन स्टिक से उसको स्प्रेड करती हूँ एंड देन आई लेट इट लेवल आउट और वो 2-3 घंटे में ड्राई हो जाता है टच ड्राई. I use एंड टू these थ्री डेज में. spatulas. हाँ सो इधर यू यूज अ प्लास्टिक स्पैचुला वुडन थिंग स्प्रेड करने के लिए आप वो सब यूज कर सकते हैं. यू कुड इवन यूज अ सिलिकॉन ब्रश Please इफ do यू हैव not दैट. use heat gun after this. हाँ या heat gun is a strict no for our varnish as well as our glaze. तो भूल ही जाना. Lot of people have spoiled projects क्योंकि वो पपड़ी की तरह वो मतलब दूध में ऊपर नहीं आता है वैसा हो मैंने जाएगा. तो एक्चुअली फ्लैटन करने के लिए आई यूज लिक्विड ग्लेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट या नाउ मतलब काफी टाइम का ब्रेक हो गया था तो आई कंप्लीटली राइट. फॉरगॉट दैट आई शुड नॉट बी यूजिंग
तो वो या फ्लैटन आउट करने के चक्कर में आई हैड यूज्ड एंड इट क्योंकि वो लोगों स्टार्टेड को रिंकलिंग. क्या होता है कि रेजिन पतला हो जाता है ना गर्म होके, हाँ, तो लोगों को या लगता है सो ग्लेज भी वैसे बिहेव करेगा, बट एग्जैक्टली. ग्लेज वैसे नहीं बिहेव तो करता। that was the thought process when I was doing that, and then I saw कि it is all wrinkling. तो फिर हाँ, फटाफट मैंने फिर बंद फिर कर मुझे याद है दिया. आपने व्हाट्सएप किया, अरे मेरा रिंकल हो गया। फिर मैंने फिर मैंने बोला फटाफट अरे उसको तुमने हटाया. चला क्यों हीट। हाँ। Then I was अच्छा, तो like, oh, स्नेहा रिप्लाइड कि वो एक्चुअली वो डायगोनल फ्लेमिंगो अरेंजमेंट बोल रहे थे, वो कब से अच्छा, तुमको बोलना है, वो सोच रहे थे डायगोनल फ्लेमिंगो अरेंजमेंट। गॉट इट, गॉट इट। thank So, you, समझ thank गए सब, you. नाडिया भी वही बोल रही थी। So thank you guys, thank you for making this live very fun. I really enjoyed, and as always, as I said, इस साल बहुत डेकोपाच प्रोजेक्ट्स आएंगे। इस महीने ही हमारे 4 लाइव होने वाले हैं with using napkins by different designers. So you'll see everybody's take, everybody's style. And thank you, Parvati, for making such lovely projects, and especially thank you for making those samples. आई नो टाइम थोड़ा टाइट था, फिर भी आउट ऑफ द वे जाके मैंने सारे डिजाइनर्स ने किया है। सो मैं सबको इंडिविजुअली भी थैंक यू वापस बोलने वाली हूँ उनके लाइव्स में। सो थैंक यू सो मच, आई मीन आई रियली अप्रिशिएट इट, इवन दो Thank आई you. मे You नॉट से love. इट एज मच। नहीं, but थैंक यू। you do say that, and we absolutely love making projects with this. मतलब it was fun. It was, it is kind of addictive also. या Honestly, मतलब आप करने लग जाओ ना, it is very calming and meditative, I feel. और हाँ, दैट्स easily सो ट्रू। projects बन जाता है. That is one of the best things. Like you saw the entire decor piece, it was done in an hour, and the results are also pretty uh, beautiful and stunning. So it's very, addictive. So we love the product also. All the products. हाँ, I think we did see a lot of people commenting, and या people they'll start receiving the napkins also soon. So I'm sure they'll love it. Please do या दे आर use ऑलरेडी them बीइंग शिप्ड आउट। gently. Yeah, please जेंटली, do use them ज्यादा ब्रश gently. जोर से मत मार के हाँ, फाड़ देना, थोड़ा प्यार से। हाँ, क्योंकि है जेंटल ही, तो उसको जेंटली ही यूज करना प्यार से, या एंड यू लव देम. Yeah. And for those of you who joined in for the first time, I saw Pranita Singh is not aware. We do lives almost every week. We try and do it. कभी कभी कोई हफ्ता सब छुट्टी पे हो या वेकेशन हो तो अलग बात है, फेस्टिवल हो. But we try and do it every week, either here or YouTube. And we try and pick up like different art forms. हम mixed media करते हैं, डेकोपाज ये महीने of course हम काफी डेकोपाज ओरिएंटेड करेंगे क्योंकि हमने टिश्यूज लॉन्च किए, उसको हमको लोगों को बताना है. But we try and do journals also. Like it's a good mix. And no worries, Craving Craft, she's saying that I joined in super late today. So I saw a lot of few people who just joined in, जो लोग ने comment किया था. So This हमारा is live what guys we save made. हो जाएगा. Yeah. दिस इज व्हाट यू मिस्ड. इसके बाद में जाके लाइव देख लेना रिकॉर्डिंग वर्जन. हाँ, हाँ. So what is your name in the red t-shirt? I love your wife. मेरा बोल रहे हो? मैं तो बड़ी ही गंदी. I wear very basic stuff. So I'm thinking if I a red t-shirt is mine, so I think that's हाँ, mine. या तो फिर आपका तुम्हारा? ही हो. मेरा तो मैंने. ये एरोपोस्टल है. ये हाँ, एरोपोस्टल है. So या this is एरोपोस्टल, I think. माइन इज नो मूड फॉर ड्रामा. अच्छा, मेरा नाम पूछ रहे हो? मेरे को लगा मेरी फैशन ख्याति. सेंस पे कौन कमेंट डाल रहा है, मुझे तो कभी किसी मतलब मिलता नहीं है इतना इजीली. So, man, Khyati, matlab, I try and do live. So, I mean, sorry, but I don't get this question anymore because हर वीडियो में मेरे लाइव में मेरा चेहरा चिपका हुआ रहता है. So, I'm Khyati. I'm one of the founders of CraftAdda, which was then Handmade and now CraftTangles. So, we do CraftTangles, which is an in-house 95% made in India products, which we sell on Handmade. So we started CraftTangles with an idea of doing a lot of made in India products. And our lives are mainly related to CraftTangles product, where we did this latest launch. So yes, मतलब मेरे को अभी मेरे नाम से सिनोनिमस हो गया ये 2 लाइन का इंट्रो. मैं हर बार बोल ही देती हूँ दिन में पूछ. So yes, I'm Khyati Kothari.
You'll find a lot of my Yeah, tutorials you on may not our realize page. it because she is so modest and she talks very, I say, undertone में, but she is the brand owner, one of the co-founders. So yeah, she is the brand owner for you, Khyati So Collab. yeah, so yes. So अभी इन लोग का plan बन गया है, come next Saturday. Yes, next Saturday we'll have fun with Sneha and Parvati will be on the other side and Sneha will be on the other side. So yes, we'll have fun next Friday or Saturday, depending on when we decide the date. But yes, definitely next week also we'll be back with another live. And thank you guys. Thank you once again, everybody who joined in, Friday, and thank you, Friday, Parvati, स्नेहा for का your Friday project. है. अच्छा फ्राइडे ओके फ्राइडे स्नेहा पक्का मतलब मुझे याद था कल फ्राइडे था बट मैं श्योर नहीं थी मुझे व्हाट्सएप चेक करना पड़ता था 10 चीजें दिमाग में चलने का ये प्रॉब्लम हो जाता है वो बंद होने वाला है हाँ उसका. ये हेडफोन्स चलो then. या थैंक यू गाइस बाय Thank you टेक केयर everyone. Thank you. Bye bye. बाय